day 9, end of 1. And we have a very overwhelming response for this entire 9 days program of phase 1. And today we have very important session, and for this session we have with us Professor Suniti Sanwal, who is head of Department of Elementary Education, and she has more than 30 years of experience in the field of child development, early childhood care and education, and elementary education. She has been a member of many advisory boards and has various publications and books to her credit. And I'd also like to mention she has contributed to the recently launched NCF for foundational stage as well. So we welcome you, ma'am, for today's session. Thank you so much. Thank you. With other, we also have Professor Indu Kumar. She is a professor in education technology at CIET NCRT, and she has work experience in education technology, ICT, e-content development, gender studies, and pedagogy of social sciences. She has more than 50 national and international paper to her credit. We welcome you as well, ma'am. We'd also like to inform you, ma'am, that we have few participants who have joined us through this direct. Many more members than what you can see here would be viewing this program. And today we have the session from 2 to 4, but we would like that if you could just wind up your presentation by 3:45, so that we can also take some questions, and then we will head to the valedictory of program. Thank you. Over to you, ma'am. So thank you, Vinita. I think I will talk about Nishtha first, and then Professor. So can you see the presentation? Yeah, it is visible. Okay. So, NEP 2020, I think, gives a lot of emphasis on for the development of the teacher, and it says teachers truly shape the future of our children and therefore the future of our nation. And the motivation and empowerment of teachers is required to ensure the best possible future for our children and our nation. So this is a quote with which NEP 2020 says, and therefore it is talking of continuous professional development opportunities to be designed and given for the teachers. So continuous opportunities to teachers for self-improvement and learning innovations and advances in their professions in multiple modes, 50 hours of CPD, that is continuous professional development. And school principals and school complex leaders will also be expected to participate in 50 hours or more of CPD modules per year, covering leadership and management, as well as content and pedagogy, with a focus on preparing and implementing pedagogical plans based on competency-based education. So NEP is laying a lot of emphasis on the teacher development and preparation. And so NEP also has expressed concerns that about 5 crore of our children are not able to read and write at their grade level. And therefore, the NEP had recommended that a mission on foundational literacy and numeracy be launched. So a mission which is known as the NIPUN Bharat mission, which is the acronym for National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy. So this was launched on 5th July in 2021 by the Minister of Education. And the vision of this mission is to create an enabling environment to ensure universal acquisition of foundational literacy and numeracy
And every child achieves the desired learning competencies in reading, writing, and numeracy at the end of grade 3. So these are the two main objectives of Nipun Bharat mission. And why by grade 3? Because research tells us that grade 3 is an inflection point, and if children are not able to learn to read by grade 3, they will not be able to read to learn. So therefore, grade 3 becomes very critical stage. So therefore, a mission for developing foundational literacy and numeracy right from preschool to up to grade 3 has been launched by Government of India. So for that, Nishtha, sorry. So Nishtha has been launched, and it is an acronym for. So there is something wrong with my slides. Anyway, so it is an acronym for National Initiative for Teachers Advancement for school heads and teachers holistic advancement, and it gives a comprehensive training program. It is a comprehensive training program for the teachers. So two nishthas have been launched. One is nishtha 3.0, which is on foundational literacy and numeracy, and another is nishtha 4.0, which is on early childhood care and education. So what is a unique? So these are all online and digital training programs. Now, what is unique about this? What is the structure of these courses? That you have, there are text resources, and there are explanatory and demonstration videos. Then there is a assess quiz for assessment, and there are text resources, interactive and reflective activities online and offline. Then there are web links, reading material, and other additional resources, and then at the end of it there is a digital certification. So I will first talk about Nishtha 3.0, that is on foundational literacy and numeracy, and tell you a brief about the modules that have been designed. So the first module for Nishtha 3.0, that is foundational literacy numeracy, is introduction to FLN mission. So it talks more about what is this mission, what is the role and functions of. So FLN mission has 5-tier system at the national level, at the state level, district level, block level, and school level. So it talks of the responsibilities and roles of all stakeholders at all these 5 stages. Then the second module here is the second course is shifting towards competency-based education. Now NEP 2020 is saying that children have to move from rote memorization to development of competencies. And this module talks what is a competency, how is it related to learning outcomes, why should we shift to competency based education. So all those kinds, what is competency based education, so all those guidance are given this in this particular module. Then module 3 is, or the course 3 is understanding learners, how children learn. So if we are designing any program for children, if we are trying to ensure that children acquire foundational literacy and numeracy, we have to teach them in a way that they understand and learn. So what are the characteristics of these children? What kind of pedagogy is needed? What is playway method? What are activities for these learning? So these kind of issues are dealt with in this particular course. Then course 4 is involvement in parent and community for foundational literacy and numeracy. And you know that uh, parents are important, parents and community both are important stakeholders when it comes to young children, because they have to scaffold a child in whatever the child has learned in the school system. So this module informs how parents and community can be reaped into the foundational literacy and numeracy program, and what are their roles and responsibilities. Then the next is understanding Vidya Pravesh and Balvatika. So NAP 2020 recommends that because we are not offering quality early childhood care and education to all the children, therefore to bridge the diversity of learners, there a 3-month play-based school preparatory module needs to be given to all children who enter grade 1. And this
under the NIPUN Bharat mission, this particular document that NCRT has prepared is named as Vidya Pravesh. And what is Balvatika? So the third year of preschool in NEP is called Balvatika. But now we will be using Balvatika for the preschool. So all those acronyms that you hear are UKG, LKG, pre-primary 1, pre-primary 2, all that. So we want to replace all of those nomenclatures with Balvatika 1, that is for 3 to 4 years of children, Balvatika 2 for 4 to 5 years of children, and Balvatika 3 for 5 to 6 years of children. So, so, so then this is again like more of uh, the ECC component, which the child has missed out, which is dealt with in this particular course. Then course number 6 is foundational language and literacy, because it is all about the mission is on foundational language and literacy and numeracy. So this module talks about different methods of language and literacy acquisition, what is balanced literacy approach, how children acquire languages. So all those kinds of issues are dealt with in this particular module. Then the next is multilingual education in primary grades. So we know that we are a multilingual country. All of us can speak 2 to 3 at least, or 4 to 5 languages each. So how does so, and especially for tribal children who are coming from different tribal dialects, what it comes to, what it means for them when they come to school for the first time and listening to and they're expected to be learning the school language very fast. So what are their issues? What are their challenges? How a multilingual classrooms can be created by teachers. So this course focuses on these areas. Then course number 9 is learning assessment. Of course, if you are in a mission and if you want to ensure that children acquire the learning outcomes, then an age appropriate assessment needs to take place, and what it is and how the teachers can take that assessment is what this course talks about. And like we had a course on literacy, we have another course on numeracy, which talks of different components of numeracy, the pedagogical processes, what are the issues, the fear of mathematics, etc., etc. So all these things are there in this language. Then because I said Nishtha is for school heads and teachers holistic advancement, the course 10, that is school leaders and for foundational school leadership for foundational literacy numeracy. This is a course which is designed by NIPA, and this is designed by NIPA, and this talks more of how leaders or the school principals can help the teachers. How can they create a conducive environment in order that children acquire the literacy and numeracy skills. Then a very important course, that is course 11, is integration of ICT in teaching, learning, and assessment. Now technology is a part of our lives, and how can we leverage the usage of technology is what this module is talking about. And then module 12 is toy based pedagogy for foundational stage, because after the honorable prime minister talked about the toys are extremely important for young children, and children learn through these toys and plays. So therefore this module gives an insight as to how toy-based pedagogy can be used at the foundational stage. So these are the 12 modules which are there in FLN Nishtha. Now, this course has been taken up by about 14 lakh teachers, and this has been translated into 6 to 8 languages, and about 14 lakh teachers have been benefited. Then I go on to the next course, that is Nishtha 4.0. It is Nishtha ECC for master trainers of early childhood care and education. And we assume that 7,000 and odd, 7,600 and odd CRCs and 86
1,000 uh, BRCs will be benefited. So they will be the trainers and they will be benefited by this course. So this has six courses or six modules. The first is significance of early years, and it talks about why early years are so critical. Why are they critical window of opportunity? Why they the first 6 years are so important for the development of the brain. Now, the course two is planning a play-based environment. That is the classroom in which children play and learn how that needs to be designed so that children learn by way of playing. So planning a play-based environment and creating learning corners and equipping the learning corners and then rotating the learning corners is what this module focuses on. Then course three is play-based activities for holistic development. So it is, I mean, once you have created a conducive environment, how play can be used in activities for holistic development of the child is the next related module. Then the fourth module is partnership with parents and community. Like we said, we did it for foundational literacy numeracy, that you have to repin parents and community if you want good results. So this module talks about that. And the school readiness is a module which talks of readiness of the school, readiness of the families and communities, and readiness of the child for school education. So this module focuses on these three dimensions of readiness. And the sixth and the last module is birth to 3 years, early identification for intervention of special needs. So children with disabilities, if they are not identified or not diagnosed at the right time, then their difficulties become disabilities. So therefore, it is extremely important that they be identified and recognized early, and that is what this course focuses on. So this is all about the two Nishtha courses that NCERT has launched. Now this Nishtha ECCE has been launched, but and it was inaugurated by the Honorable Prime Minister. It has been launched, but the states are doing the back end work, and therefore the modules, I mean the subject experts, it hasn't started. And another feature, in addition to whatever I said, another feature of Nishtha is that we have a live program where I mean, it is told beforehand. The coordinators tell their teachers and the participants and all those who have taken the course, and then we have a live in program where we physically again explain the concept. And if anybody has any queries, any questions, then they pose their questions, which we address there and then. So that is an additional feature of all Nishtha courses. These are all online courses, and at the end of it, a digital certificate is issued to all the participants who have been able to complete the course. So that is all from my side. And thank you. And if there are any questions, then I can take questions, or if you reserve it at the end, then my colleague Professor Sandhya Sangai may answer your queries. So Vinita ji, can you hear me? Um, Yeah, as of now, we don't see any question on the chat box. Let me just invite it from the participants. If somebody has a question based on the presentation just shared by ma'am, then please raise hand, we'll unmute you. Or you may also write it on the in the chat box. There is one question in the chat box, ma'am. Somebody from Ladakh is asking, can you explain the stages for co-location?
So I don't know. This question is not really related with my presentation, but are you asking a question of co-location of Anganwadis with the school, with the primary school? Are you talking of that? Co-location of what? Yeah. So, so this was, like in 2017, the Ministry of, though it is not related to the presentation, but still I would reply to what he's asking. That Ministry of the Principal Secretaries of MWCD and MHRD then wrote a letter that if there is if if there is an Anganwadi which is close to a primary school, then they can shift the premises, and if they are on a rented building, and if the room the school has a room to spare, then they could probably co-locate. So there were certain conditions that the school should have a spare room to be given to Anganwadis, and it should be physically feasible for the children to attend this co-located Anganwadi. Now I think the ministry is saying that every Anganwadi needs to be, even if not physically co-located, needs to be twinned. It needs to be twinned to a primary school. So that is what is the criteria for co-location, as far as I understand. So Ministry of Education has also issued a guideline for co-location, and you could probably refer to those guidelines if you want more details. Thank you, ma'am. Thank you for taking that question. Um, I think we have one more question. Yeah. So the question is, Urdu medium teachers, this time there is no GC module in Urdu language. For Urdu teachers, I believe they want to ask for in the context of Nishtha. What is GC module? Um, yeah, so that is what is not very clear. I assume, do you want about Nishtha module? Yeah, so Generic courses, generic courses. yeah. So generic courses, he's asking about secondary. I guess he's asking about secondary Nishtha. That is Nishtha 2. Urdu, of course, for FLN, we have all the courses in Urdu, and ECC, because we have not, the states need to translate it. So Urdu, we have not translated the ECCF, but for all FLN courses, you have the content and the videos and all the discussions in Urdu as well. Okay. Um, do we have any other question? All right, ma'am. So thank you for your presentation, ma'am. If there will be any further questions on the presentation just shared by you, we will forward that to you, and then you may provide us the reply for the same. Thank So you. ECC courses, sorry, there's another question that I read as you were thanking me. So ECC courses, I think like yesterday this one the NCF for foundational stage has been launched, which is the approach is, we, of course, you all know that we had the learning outcomes defined from preschool to grade 3 in NIPUN Bharat, but the NCF uses a little different approach. But the modules that, so the approach, we were talking of 3 developmental goals in the NIPUN Bharat. And so here in the NCF ECC, it talks of 13 curricular goals, curricular areas, sorry. So the approach is slightly different, but whatever this Nishtha ECC that we have launched apart from that approach, I think the modules which are there are good for teachers to take in as of now. But little alignment with NCF ECC may be required now I mean, with the NCF may be required. But otherwise, all the modules can actually be taken by the teachers.
Right. Thank you, ma'am. Thank you for your presentation. Now we move to the second part of today's session. Yeah, thank you so much. Thank you. There is also a request before you leave that provide the ECC courses in Urdu as well. We do it in Hindi, English, and Urdu. We will do it in for ECC also. Yes. Now I'd like to invite Professor Indu Kumar to give her presentation. Thank you very much. So I will be focusing on good afternoon, everyone. And welcome to this session. I will be basically focusing on FLN resources on Diksha because Nishtha has already been covered by Professor Sanwal. So the kind of resources we are having on Diksha for foundational literacy and numeracy will be the focus of this presentation. Basically, we have four to five types of resources which are linked with three developmental goals and the learning outcomes of foundational literacy and numeracy. And these types are worksheets, assessment sheets, infographics, bite-sized videos, and gamified content and gamified assessment. So let me first make my presentation. Then if internet supports, I will take you through the portal which we have, the page which we have for FLN, so that you get to know how to uh, access these resources for FLN, which are aligned with developmental goals and learning outcomes of FLN. So I'm sharing my screen to finish my presentation first. Then I will take you through the portal and we will actually be seeing some of the resources which are there. Yeah. So I think my presentation is visible. Digital resources for foundational literacy and numeracy. Hmm. So, what is the crucial factor, cruciality of foundational literacy and numeracy, that is FLN? So, you all might be aware of it, that it is also flagged in NEP 2020, that the ability to read and write and perform basic operations with number is a necessary foundation and an indispensable prerequisite for all future schooling and lifelong learning. So that is the code from NEP 2020. And that means a weak foundation in literacy and numeracy may impact a child's entire future schooling and performance in future schooling and in other subject, because language is the basic to prerequisite to the way we express ourselves, either verbally or in written mode. So until and unless we have these foundations very intact, it is very difficult to perform better in the entire schooling process, though there is nothing wrong with a child's cognitive ability, but because the foundation laid in literacy and numeracy is poor, that is why a child is not able to perform. So that is the fact. And that is why we know that we are, as far as achievement of learning outcomes are concerned, India is lagging far much behind than the
many of the underdeveloped countries, undeveloped countries also. So that is a very important concern for us, that we all know. So to support the mission, we have a separate vertical for foundational literacy and numeracy resources on Diksha, so that there is no dearth of resources for teachers to achieve the foundational literacy and numeracy. Use these resources and practice them with children so that they get quality and interesting content to support the achievement of foundational literacy and numeracy. So the stakeholders can explore FLN resources on Diksha. So there is a continuous process of uploading FLN resources to cover learning outcomes from preschool to grade 3. So as we all know, there are 6 grades which are in focus: preschool 1, preschool 2, preschool 3, class 1, class 2, and class 3, which needs attention for achieving foundational literacy and numeracy. So because this initiative, this mission and the development of resources is a recent initiative. So currently, it's not essential that we have covered all the learning outcomes aligned to 3 developmental goals, but it is a continuous process, a continuous effort that we are working towards of having more and more learning resources for all the 3 developmental goals and all the learning outcomes aligned to these developmental goals. So these learning outcome oriented digital resources include, I have already mentioned what they include: infographics, worksheets, assessment sheets, bite-sized videos for FLN. Uh, there is also plan to have interactive digital resources on Diksha, and more and more interactive digital resources. We already have started uploading interactive digital resources on Diksha, where a child or a teacher can actually interact with the content, like drag and drop kind of content and other such gamified content. So gamified content is another area that we are working towards in terms of having FLN resources. Then online professional development of teachers for building understanding of FLN has also been addressed through this page. What content is envisaged and developed for the teachers for building capacity in FLN have already been covered by Professor Sanwal. So there is a capacity on Diksha also to house these courses there. So we can also go through this page which we have created for FLN to access all these FLN courses. So how to explore FLN resources on Diksha? So I have taken these screenshots. So when you type the URL diksha.gov.in, so you will get this page, diksha.gov.in. So you will arrive on this page of Diksha. So if you click explore on this banner, you can see this banner, and there is explore written over here. If you click on to explore, then we reach on to the next page that I will be showing here. So we will arrive at this page after clicking on to explore. Then you can see here that there are different document sections, and there are document related to NIPUN Bharat mission. So here is FLN mission document, NIPUN Bharat document, Vidya Pravesh document, FLN launch video is also there, and NIPUN mission anthem is there, which is also can be accessed from here. So if you type the URL given here, diksha.gov.in/fln.html, then you directly reach onto this page. You will skip the previous page that I have shown. So you have to change the URL a little so that you directly land onto this page.
So if we scroll this page down, then we will get this. So there is a brief about foundational literacy and numeracy. What do we understand by foundational literacy and numeracy? Although there are full complete document about the mission, but a brief is given here so that a user who want to understand FLN very briefly can read this and understand what do we understand by foundational literacy and numeracy and what is NIPUN Bharat. Then if we scroll further, so you will get this explore developmental goal wise e-content. So here you can see these 6 grades: preschool 1, preschool 2, preschool 3, which is Balvatika, then class 1, class 2, and class 3. And you can see the explore below each of these grades. So if you click on to explore, what we will get, so it is given on the next screenshot. So here you can see uh, uh, in the screenshot that explore, clicking explore for preschool 1 uh, shows this drop down. So all the 3 developmental goals are given here: developmental goal 1, developmental goal 2, and developmental goal 3. So you have to click on to any developmental goal of your choice on which you want to explore resources, and you will get this. I'm clicking on to next screenshot. So I have clicked developmental goal 1 of class 1. So you can see here all the key competencies are given on the right, left hand side, and in the on the right hand side you will get the list of all the learning outcomes aligned to this developmental goal. So all these learning outcomes are codified, like HW 1.1 means health and well-being, a resource, the first learning outcome on the first developmental goal, that is health and well-being. HW stands for health and well-being. So if we click scroll further, so we will get this again. Yeah, for in the similar manner we can also explore resources for class 2. So if we click on explore to any of these class, so we will get these 3 developmental goals and the outcomes aligned to this. So here you can see an actual resource. There is a player on the left hand side where a resource gets played. So this is ECL1. ECL1 is the code for Hindi language, and ECL2 is for English language. So here you can see the learning outcomes associated to developmental goal 2 for class 2 and a learning resource which is shown at the left, which is aligned to ECL 1.5.5a. So that is the code of the learning outcomes. And the learning outcome is परिचित संदर्भ में बाल साहित्य और पाठ्य पुस्तकों के बारे में अनुमान लगाते हैं तथा पढ़ते हैं. Or it is also catering to one more learning outcome, that is चित्र कथा, कहानी की घटनाओं और पात्रों के बारे में अर्थ ग्रहण करते हैं और उनके बारे में स्वनियंत्रित लेखन या उनके बारे में लिखते हैं, स्वनियंत्रित लेखन लिखते हैं, what they want to write. So this is an infographic which depicts these 2 learning outcomes. So how, based on these pictures, the children बच्चे किसी उस घटना के बारे में what is shown over here अनुमान लगाते हैं और उसके बारे में, घटना के बारे में लिखते हैं. After we scroll further, we will get this, a brief description about each of the developmental goal,
developmental goal 1, developmental goal 2, developmental goal 3. So here you can see what developmental goal 1 is meant for, what developmental goal 2 is meant for, and what developmental goal 3 is meant for. I think during these 9 days, you have already been oriented to all this. So I'm not going to read this, but this is also shown on the FLN page of Diksha. So if we scroll further, we will get courses for continuous professional development and the courses for all the stakeholders. If we click on to explore here, it will land onto the page where FLN courses are housed. So that was the screenshot of the entire page of FLN on Diksha. So let me actually, if internet support, let me actually take you through the resources. So this is the course page. The course page will appear like this. So this is the screenshot of that. And now I am trying to actually take you through the portal, actual portal. So I hope you can. I will reshare. Yeah. So after typing the URL diksha.gov.in, इसको थोड़ा सा हाँ. So you will get this page which I already shown you. So here you can see there are several dots which belong to different verticals on Diksha, which are highlighted in NEP 2020. So the first one is NIPUN Bharat mission, which introduces foundational literacy and numeracy. So I am now clicking on to explore as I explained using the screenshots. So if I click on to explore, so we will get this. I hope the screen is properly visible and you can see this. So here you can see the documents which I have already shown to you. So NIPUN Bharat documents, NIPUN mission videos, regional workshop resources are also there. So Ministry of Education has organized in the month of November last year, they organized 5 regional workshops and where the different states and UTs stand as far as the implementation of Nipun Bharat mission is concerned. So you can see their PPTs and get all the information about uh, the development that they made by that time point of time. So if we click on to explore under Nipun Bharat documents, so we will get this. I think my screen is being shared. Yes, ma'am. Is there anybody to tell me? Yes, yes, it is visible. Uh, Thank you. So when we get onto the platform for the first time and try to explore any resource, we need to submit little information here to get onto the resources. So I have filled this small form. I submit it. So now we can see the what kind of documents are there. So this is Nipun Bharat document. The entire 332 page document you can explore here.
And at the left hand side, right hand side, you can see other documents which are housed here on this FLN page. So you can see NIPUN Bharat. You can see follow my cursor to get to know what all documents are there. NIPUN Bharat Book is there. Vidya Pravesh document is also there. Home-based learning guidelines are there. National webinar on reading for learning and pleasure is also there. So if we click on to this, so you will get NIPUN Bharat Flipbook. So if by clicking here, this book will play at the left hand side box. You will get this resource. So I'm just to let you know how to get it. So here you can see the flipbook. Okay, so I'm going back. Just wait for a moment. Okay. Just wait for a moment, I think. So if we scroll down, we see about foundational literacy and numeracy, as I already shown you through these screenshots. Then you can see the learning resources which are aligned as per the 6 grades for foundational literacy and numeracy: preschool 1, preschool 2, preschool 3, class 1, class 2, and class 3. Below that, you have a brief description of each of the developmental goals and then courses. So this is the entire page and you will get everything over here. NIPUN Bharat documents, NIPUN mission videos, regional workshop resources about foundational literacies and numeracies, developmental goal-wise e-contents, then brief description of each of the developmental goals, and then courses for continuous professional development of teachers. So I would like to show you here a few resources. Let me check if internet supports to play them. Otherwise, I have downloaded resources also to showcase here. I have with me Dr. Prachi. So who will be helping me out exploring these resources? So where we are going on to first, which developmental goal? So preschool 1, where I have clicked on to explore and developmental goal 1. Yeah. So you can see here the all the key competencies of developmental goal 1 of preschool 1. So it will be the first resource in case of every developmental goal that we get the, by default, we get the key competencies of uh, all the developmental goal as the very first resource. Then at the left hand side, you can see the list of learning outcomes linked to this particular developmental goal 1, and it was developmental goal 1 for class preschool 1. So here you can see all the learning outcomes. So if I click on to
This is the code of learning outcome, which you can see here, HW 1.18. And the learning outcome is exhibits fine motor skills and simple eye-hand coordination in various activities like scribbling, printing, etc. And here you can see all the learning resources aligned to this particular learning outcomes. So there are videos, a number of videos which cater to this learning outcome. And then you can also see infographics. So these are the two kind of resources which are aligned to this learning outcomes. Other resources like worksheets, assessment sheets, and gamified assessment will be uploaded, developed, and uploaded shortly in or in due course. So we will click on to this video, Sabjiyon se Chapai. And please let me again reiterate the learning outcome. Exhibits fine motor skills and simple eye-hand coordination in various activities like scribbling, printing, etc. तो ये जो learning outcome है वो है सब्जियों से छपाई, which ensures eye-hand coordination as well as the development of fine motor skills. So let me play this video for you. नमस्ते। आज हम वेजिटेबल पेंटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली है। देखिए मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, बैंगन लिया है, करेला है और भिंडी है। और मैंने सबके जो ऊपर की हिस्से है, डंठल का हिस्सा है, उसे काट दिया है। ये देखिए। और इस तरह यहाँ पे एक प्लेट में कुमकुम और हल्दी है और पानी है। हमें इनको पानी में से मिक्स करना है और फिर इनके प्रिंट इस पेपर पे लेनी है। अब हम बैंगन का ये डंठल लेंगे और हल्दी में डिप करेंगे। देखिए ऐसे। और ये मैंने देखिए आपने, ये क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। क्या आपको दे रहा है? अब हम वेजिकल लेते हैं। ये वेजिकल डंठल है, तो हमने कुमकुम के पानी में डिप कर दिया। देखिए अच्छे से आपको डिप करना है ऐसे। अब हम इसकी प्रिंट लेते हैं यहाँ। क्या लग रहा है ये? मैंने करेले का डंठल लिया। अब मैं इसको हल्दी और कुमकुम के मिक्स पानी में डिप कर दूंगी। ऑरेंज कलर हो गया, राइट? देखिए ऐसे। हम इसकी प्रिंट लेते हैं। लग रहा है? क्या लग रहा है? ये तो ये फूल लग रहा है। अब हम भिंडी लेंगे। देखिए भिंडी का डंठल है, तो हम उनको में डिप करेंगे और कितना बनाएंगे कि क्या बना रहे हैं हम? देखिए वापस से मैंने कुमकुम में डिप किया और ये क्या बना रहे हैं हम? कुछ अच्छा सा डिजाइन। देखिए क्या बनाया हमने। तो आपको ऐसे ही वेजिटेबल पेंटिंग करनी है। लेकिन आपने देखा कोई भी सब्जी वेस्ट नहीं की है। मैंने सारे सब्जी के डंठल इस्तेमाल किए हैं। आपको भी ऐसे ही सब्जी के डंठल से पेंटिंग बनानी है, फोटोज लेने हैं, वीडियोज लेनी है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देनी है। So this was the an example of a bite-sized video. So let us see the infographic attached to the same learning outcome. So you can see here the learning outcome written at the top of the infographic. Exhibits fine motor skills and simple eye-hand coordination in various activities. So here you can see children are doing the same activity which was shown in the video as well. And teacher is the facilitator over here.
helping the children out to develop to do this activity using the various vegetables. So, so we will be watching a few more resources aligned to different developmental goals. Just wait for a moment, bear with me. So now let us explore which class we have identified. Class 1 and developmental goal 2. Is that developmental goal 2 which we have identified? Yes. Raji? Yes. Yeah. So let me click on to developmental goal class 1 developmental goal 2, which is for language ECL 1 and ECL 2. That is Hindi and English. So you can see here by default, the first resource gets opened is the key competencies. So now I will click on to a learning resource, that is ECL 4. ECL 1 4.2. So which is for Hindi, and the learning outcome is selects book from reading corner and talks about or narrates story with the help of the pictures. So we can see the list of resources aligned to this learning outcomes. जो कार्य पत्रक है यानी कि वर्कशीट है, असेसमेंट शीट्स हैं, देन वीडियोस हैं, देन इन्फोग्राफिक है. So which resource we are going to show? So let us see a infographic first, and then we will be watching a video. So this is the infographic. पढ़ने का कोना या पठन क्षेत्र से किताबों का चयन करते हैं या किताब का चयन करते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, चित्र की मदद से कहानी सुनाते हैं. ये लर्निंग आउटकम है. तो इसमें जो प्रत्यक्ष अवलोकन क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या क्या है इस चित्र में दिखाया गया है, और क्या सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, वो इस चित्र के माध्यम से हम बच्चों से करा सकते हैं. ये एक सैंपल है, एग्जाम्पलर है फॉर द टीचर्स, कि इसमें जूते चप्पल की दुकान है, एक बिल्ली जो है वो दूध पी रही है, यहाँ देख सकते हैं. चिड़िया सारंगी की धुन सुन रही है, चिड़िया यहाँ बैठी हुई हैं. और एक सूक्ष्म अवलोकन है जो मुझे भी देखने में दिक्कत हो रही है. यहाँ पे केवल दाहिने पैर की गुलाबी चप्पल पड़ी है. तो ये इस चित्र में ये देखें हम यहाँ पे, ये तो ये एक सूक्ष्म अवलोकन है. दिस इज दी गुलाबी चप्पल जो केवल दाहिने पैर की है, बाएं पैर की दिखाई नहीं दे रही है. So like that, we can encourage children to see the infographic, talk about them, identify various features of the picture. So this is the example of a worksheet on the same learning outcome. I will just scroll it. कि टीचर क्या क्या एक्टिविटीज करा सकते हैं using this worksheet.
This is example of an assessment sheet on ECL 1.4.2 and ECL 1.4.5. तो इसमें पहला प्रश्न है, बच्चों के साथ बातचीत करने के लिए निम्न सवालों का प्रयोग किया जा सकता है क्लास में। ये चित्र में जो बच्चे बैठे हैं ये आपस में क्या बातचीत कर रहे होंगे, बोर्ड पर क्या लिखा है, आप अपने स्कूल के पहले दिन के बारे में बताइए, उस दिन क्या हुआ, आपको कैसा लगा। तो इस तरह से हम बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित कर सकते हैं चित्रों की मदद से, ये एक्टिविटीज करा। नेक्स्ट लर्निंग आउटकम, अली घर में पढ़ाई कर रहा है, अभी उसकी नजर बाहर नहीं कर रही, नल से पानी जमीन पर टपक रहा है, आसपास का फर्श गीला हो गया, अली ने एक लोटा नल के नीचे रख दिया, पानी अब लोटे में गिरने लगा, थोड़ी देर में लोटा पानी से भर गया, अली ने लोटे का पानी पौधों में डाल दिया। तो ये एक घटनाक्रम है। ये घटनाक्रम दिखाने के बाद उसके बाद हम क्या एक्टिविटीज फॉलो अप एक्टिविटीज कर सकते हैं, दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो। कैसी लगी सबको ये कहानी? कहो ना, मुझे भी अच्छी लगी। कहानी सिर्फ अच्छी लगी या कुछ समझ में भी आया? हाँ दीदी, सब समझ में आया। वेरी गुड। तो बताइए, अली कहाँ पढ़ाई कर रहा था? अली घर में पढ़ाई कर रहा था। शाबाश। अली की नजर नल पर क्यों पड़ी? क्योंकि नल का पानी फर्श पर टपक रहा। वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये बताइए कि अली ने नल के नीचे लोटा क्यों रखा? पानी बर्बाद ना हो इसलिए उसने उसके नीचे लोटा रख दिया। दीदी, क्या मैं एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, बिल्कुल पूछो। अली ने पानी को बचाने के लिए लोटे की बजाय नल को ही बंद क्यों नहीं कर दिया? शाबाश महक, बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने। तो कौन बताएगा इसका जवाब? मैं बताता हूँ। हो सकता है नल खराब हो, इसलिए अली ने नल को बंद करने की बजाय लोटा रख दिया। हाँ, ऐसा हो सकता है। शाबाश। अगला सवाल भी मैं पूछूंगा और मेरा सवाल है, पानी को बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसका जवाब पहले मैं बताती हूँ। नल को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। टपकते हुए नल को ठीक करवाना चाहिए। बर्तन या हाथ वगैरह धोते समय लगातार नल को नहीं चलाना चाहिए। और हाँ, धीमी रफ्तार से नल को चलाना चाहिए और नहाने के लिए बाल्टी और मग्गे का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत खूब। अब मुझे भी समझ आ गया। सभी ने कहानी को बहुत अच्छे से सुना और समझा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि just a moment. So now we will see some resources on ECL2 as well, that is for English. So the learning outcome is connects
text with illustrations while reading the story. So here you can see worksheets and activity sheets are there, assessment sheets are there, video and infographics are there. So I will play a video which is an African folk tale, and the video goes like that. Once upon a time, there lived a happy family. They never fought with each other. They helped their parents at home and in the fields. But they were not allowed to go near a fire. They had to do all their work during the night because they were made of wax. But one of the boys wished to go out in the sunlight. One day, he planned to step out. Alas, it was too late. He melted in the hot sun. The wax children were so sad to see their brother melting away. So they made a bird with the melted wax. They took their bird brother up to a high mountain. And as the sun rose, he flew away, singing into the morning light. We can see an infographic also based on the same story and based on the same learning outcome. Connects text with illustrations while reading the story. So here you can see pictures, and below the pictures there is a text associated to the picture, and like that the whole story goes. So you can see the sequence of these stories into text and also the illustrations related to the story. So here the story goes. So which helps children connect text to the story, illustrations while reading the story. So there is also a provision of rating to each resource. Here you can see. So you can rate this content and submit. There is also a provision of downloading these resources. You can download and then use. It is not essential that all the time when internet is there, then you can use these resources. You can also download these resources and use offline. So let us also see a resource on EVS, the developmental goal 3. For class 3, this is for class 3. Which learning outcome we are looking at? EVS 6.1. So what EVS 6.1 says, identifies simple observable features on leaves, trunk and bark of plants, animals and birds in immediate surroundings. If we click on to this learning outcome, so we will get the drop down which shows all the resources aligned to this learning outcome. So you can see worksheets and activity sheets, assessment sheets, videos, infographics, gamified content is also there aligned to this learning outcome. So you can also see one example of gamified learning outcomes. Let me play the video first.
because I have already shown you samples of infographics, worksheets and assessment sheets. So we will see here a, gamified example of a gamified content also. So let me play the video first. Are you coming with me to the park? Oh, great, Mom. I'm so excited. Let's go. Mom, these trees are not different from each other. Yeah. Some of them differ from each other. Some have similar things. These plants here, the leaves are different in similar. Yeah. You can call them names. And this one, it is triangle. You remember this shape? Yes, Mom. I remember. I had studied this shape in my math class. Oh, one wind must be going around. Its fragrance always attracts me. Then let's find out where we are going. Ah, found them. Hey, look here, Mom. This is so amazing. Yes, I used to think that only flowers are colorful. The leaves of this plant are so beautiful. This purple color is so attractive. They're so soft to touch, just like our velvet plant. See there, the plants are amazing. Oh, the bark of this tree is so smooth, unlike other trees. It shows some trees have smooth bark, some have soft. Now, let's we visit the park tomorrow. Sure. Oh, Mom, look at them. A cat is running after a rat. Dog is running after the cat. Good morning, Mom. Oh, Mom, what bird is this? It's woodpecker. Let's go to the park. So, a variety of children interacting with each other, making this morning. So you can see here 3 lines. If you click on to these lines, so there is a provision, this drop down comes. You can share this resource with anyone and you can also download. If you click on download, you can get the resource downloaded. So let us see the example of a gamified content. So drag the words into the correct box. So here a bird which swims. So we have to identify the bird from here. So I have chosen duck. So I can drop it here and I have done it correctly. Then a bird which has black feather. So let me choose a wrong one. So I have, so it will come as wrong that I have chosen a wrong option. So like that we can drag, drop and learn. I'm just doing it like that randomly. So I got 2 out of how many? Out of 8. Like that we can also use 2 out of 8 is coming. And if we want to see the solution, we can also see solutions. So here the right solutions are given. And if you want to retry the content, you can also retry. So you can click on to retry and retry. So like that, an element of gamification is built while in an attempt to achieve the learning outcome to the fullest. So we can retry, we can do trial and error, we can read, understand, and do the questions to such gamified quizzes.
So there is one more gamified content aligned to the same learning outcome. So we have to find the words from this box which is given from the grid. So like texture, smooth. Here we can see hairy. So like that we can find words. So an element of gamification is also added, and because this is you might be thinking it's a bit complex uh, game which I have shown here. So it is for class 3. It is not in case of the difficulty level and the nature of learning outcome has also been taken care of while doing the learning outcome. So like that, resources are aligned to different developmental goals and learning outcome. That was all from my side. If there are any questions, we can take questions. Uh, Yes, Thank you, Vinita, can you Professor. take questions? Yeah. Yeah, thank you for this wonderful presentation. It was very, very clear that what all kinds of contents are there in Diksha FLN, and I'm very sure that these resources will be very useful for the teachers and state officials. Just one request that I also have is that if you could share the link that you were showing in your presentation in the chat box. In the Mhm. meanwhile, participants can The either write URL of the portal, the you want URL to? of the portal. And Okay. one more question that I had, I tried logging in from the app, Diksha app. So, Hmm. but I was not able to go to the portal that you shared. If we go by Diksha Gov in. So, is there any Yes. mechanism that is different? You can share that also. Actually, because they are being newly builded upon as per the NEP 2020. So all these verticals as of now are not mobile responsive. So it will be better if you get these resources from the portal, not from the app. But we are into the process of making them mobile responsive, and in due course we will be able to access these resources through mobile app as well. Right now it is not built upon the app. Okay, thanks for clarifying that. Now I invite questions from the participants. You can raise hand, then we will unmute you, or you could also straight away write your question in the chat box. Is there any question? Okay. It seems there isn't any question. I think the presentation was very, very clear because it was demonstrated, and yeah, we are receiving positive responses on the chat box that it was very useful and informative session. Okay, there is one question. Mm. So they're asking if FLN tools and FLN resort are same Resources. resources. Now FLN tools and FLN resources are same, so this is the question. No, these are not same. Resources are different and tools are different. If we have several mobile based solutions like mobile app,
to achieve the objectives of FLN, then that mobile app or the software is a kind of tool. But the resources in the form of infographic, worksheets, assessment sheets, bite-sized videos, and gamified assessment and uh, mm, uh, resources, gamified resources are resources. So like there are various tools also. If you want to develop some infographic using a particular software, so that will be termed as an FLN tool. So to teach something through mind map, if you want to just roll down a particular concept, so that is a tool, that particular software which help us create an infographic for FLN is a tool, and resources which are housed on Diksha are resources. That's it. So somebody has written, please show us any English worksheet. I have already shown you the portal. So if you go on to ECL 2, so you can get the worksheets aligned to the digital resources. So it was just an exemplar presentation. You can further explore the portal, and you can access any kind of resource which you want and which is there. So I have already typed the URL here, diksha.gov.in. So by using the URL, you can get onto the portal and access any kind of resources which are there. But a lot of learning outcomes, you will find that resource will come soon, because we are into the process of developing resources. Department of Elementary Education, which is headed by Professor Suniti Sanwal, is also giving us resources for each of these learning outcomes. We are also partnering with various organizations to get resources who are into the development of FLN resources, and at CIT also we are developing the resources in-house. So we are adopting various modes to get more and more resources. Question. Uh, Thank you, Professor Hindu. I also want to ask you that this is the national portal, National Diksha portal, where NCRT with its partner organization have collated to create wonderful resources for foundational literacy and numeracy. Is there any way that states can also and create their own portals using their local resources, or using some already available resources from internet? If you could just guide, because we have state officials and ATF and DTF members, maybe this information can also be helpful for them, that how they can contribute to this pool. Yes, Vinita, that's a very, very relevant question. As you already said that it is a national platform, national platform, which we are seeing as one nation, one platform. But it's not that everything is controlled from the national level by NCRT. So we all know that different states and UTs are also tenants on Diksha, and they have complete autonomy to use their spaces the way they want to use. So there is a possibility, and we are there to help them out. We have announced it in the monthly coordination meeting that we organize every month with the coordinator, state level coordinators of Diksha. They can have their own such page for foundational literacy and numeracy, and they can house their own resources over there in their particular regional language. They can also take our resources, because there is also a provision of downloading these resources, translate them into their local language, and house them in onto their own spaces that they can create. So they have this autonomy to have their own
a resource page on their tenant. And if there any if any support required, so we are there to provide that support also, to help them out creating such page on Diksha. Thank you, Yes. Dr. Inu. I think that is very helpful for states to know. I think there are no further questions on the chat. I'm sure I'm visible and audible No, both. no, Rituji. I was with you in NCRT and just Yeah, now I in know. MOE. I'm back to my office, ma'am. That is why I was wondering. So you are here Yes, I'm very much here. and you So, are having me ma'am, online. yeah, ma'am. So thank you so much for the session, and I'll request all of you to wait for some time. I've just spoken to AS Sir Sri Santosh Kumar sir. He is not well, but he's agreed to be in the valedictory session. So I can see ma'am has finished the session early. So I'll just request sir if he can Because the join previous early. session was just for half an hour, so that is why So ma'am, if you I want, you think can carry on. You can carry on. honey, I have already done अच्छा ठीक है. whatever I wanted to. I have shown them a variety of resources aligned to 3 developmental goals and Yes. the learning outcomes. Okay. And I have addressed the queries also which they had. Vinita also had posed some of the very relevant questions which are helpful to the participant to take this initiative further at state and UT level. Yes. So let me give me 5 minutes to arrange early valedictory so that because Okay, Diwali आ रही है सब लोग जल्दी ऑफिस से जाना चाहते हैं, they would like to celebrate I with the know. colleagues. So I'm also thinking in the same way we have planned something in our office. मेरे ऑफिस ने बहुत कुछ arrange किया हुआ है. So similar same things are happening in your office also, and the offices of participants also. So give me 5 minutes. Uh, Stay tuned, and I request the state officials or nodals or the state से जो लोग जुड़े हुए हैं, Dr. Ritu, please. can I leave the meeting because there is a meeting organized with Diksha coordinators, which I Yes, just ma'am. mentioned. Yes, ma'am. You can leave. State coordinators of Diksha from, I think it is, Yeah, ma'am. 3:45 we have to log in. Thank you so Yes, much. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Uh, yes. Bye So, bye. See you again. yes, ma'am. So, participants, I request you please inform your state project directors and SCRT directors and other state officials to join for valedictory. Give me five, make just inform them and give me 5 minutes, and maybe after 10 minutes we will rejoin for the program. Yeah, If you the want, link will be same. link will be same. You to leave the link, but you join again because there would be something we would like to share with you, and also we would like to listen from you as a feedback of this program, and we will announce the second phase during this program. Thank you.
Ashwini ji, please make Dr. Ritu Chandra and AS sir co-host. And Professor Sridhar Srivastava will also be joining us. So as and when he join, please make him also a co-host.
So Dr. Ritu, Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon. afternoon to one and Sir, all. yes, just give me 1 minute. Sir, Yeah. yes, sir. Can we start? Please, please. Yeah. So, sir, Professor Sridhar Srivastava sir is also with us. Uh, so, participants and all the experts and officials from the Ministry of Education, I welcome you again for this valedictory of this 9 days program of that is actually an orientation or a training of academic task force members and district task force member. Um, Sir, sir, for your information, I had because इसको preponed हमें करना पड़ा था, so I had requested the state officials to inform the state project directors and SCRT directors if they can join. So I can see some of the SPD state project directors and SCRT directors are here for valedictory function. Uh, So this first phase is now finished. We are heading towards second phase. So with this connecting, this is a connecting. This would be a connecting period, and during with this period, we will be celebrating Deepavali. So this is a Deepavali break, we can say. And sir, without taking much time, I would like both of you to give good wishes to our participants. So because Professor Sridhar Srivastava sir, Joint Director, NCRT, has to come to ministry for some work. So I would first request Sridhar Srivastava sir to give his valedictory note. Yeah. Thank you, Dr. Ritu. As you rightly mentioned that we are coming to an end, and this is a valedictory session of this training program of ATF and DTF, and we are ending on a we are heading towards a good occasion of festivity also. So we are very clear with the purpose. And yesterday, when I was involved in a session, and I was really very encouraged to see the kind of questions which were coming up. So that gives us confidence to believe that at least the participants and our fellow colleagues at the state and district level, they are just aligning with the purpose of NIPUN Bharat, and they are also feeling that they have a role to play in achieving the goals of enhancing the learning level of children in the country. So these are the words that I want to offer to them, and we have great hope from uh, them. And NCRT as an academic body is interacting with the state and union territories, and on certain occasion it goes up to district level also, sub district level also, and many academic aspects are handled by us. But surely this kind of encouragement gives us great impetus and further believing that we will be meeting our targets and success goals. So with these words, I again wish you all a very happy Deepavali and festivity and season greetings and good health and all the goods that we need to see in our endeavors. I wish you all the best. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. You rightly said that NCRT is an academic body. NCRT's role is very, very crucial, especially for the implementation of NIPUN Bharat mission. And we would be in contact with you continuously, even for the second phase and beyond this training program. We are planning to have many such training programs for the participants. They have active participation has given a lot of motivation for being in touch with them. So, sir, your cooperation it was very much with us. You yourself has taken a very good session yesterday. We have received a very good feedback also. So you made sure that all the NRG members are involved. So, sir, thank you so much for cooperation, your cooperation for this training program, and we seek your cooperation for further
engagements. Thank you so much, sir, and happy Diwali to you. Thank you. Thank you. So now this is the time to listen to our Additional Secretary Shri Santosh Kumar sir. Sir is not well, but because of your interest and sir's interest in the implementation of NIPUN Bharat mission, sir would like to interact with all of you. So let's see what sir would like to share with us for this training program. Yes, sir, over to you. दीपावली सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत अगर मुझसे पूछा जाए कि पिछले ये 10 दिन का प्रोग्राम कैसा रहा, तो जो लोग कहते हैं साहब, तो अगर इन वन वर्ड, उम्मीदों से बहुत ज़्यादा अच्छा। आपको बताएं, लगभग 45,000 लोग, 45,000 लोगों ने इस पिछले 10 दिन में लगातार हमसे यूट्यूब लिंक से इसको जुड़े रहे। हजारों की संख्या में आप लोग हैं। इट शोज, देखिए साहब, ताली एक हाथ दो हाथ नहीं, ताली तो सब हाथ से मिलके बजानी है। और मैं इसलिए इससे बहुत प्रफुल्लित हूँ, यह मिनिस्ट्री इसलिए बहुत प्रफुल्लित है कि सब लोगों ने मिलके, अगर कहा जाए ना कि एक वर्ड होता है सिनर्जी। सिनर्जी कहता है कि मतलब अगर सब कायनात में सब लोग एक साथ मिल जाएं, कायनात मतलब दुनिया में अगर सब लोग एक साथ मिल जाए तो सिनर्जी पैदा होती है। तो इसमें नेशनल रिसोर्स ग्रुप एनसीईआरटी का, जिसके स्पोक्स पर्सन थे, मिनिस्ट्री, एटीएफ और डीटीएफ जिसके आप साहबान मौजूद हैं, एसपीएमयू, डीपीएमयू, एसपीडीज, क्या सेक्रेटरीज, क्या कम्युनिटी, क्या पेरेंट्स, क्या टीचर्स, क्या मतलब किसको रूसवर अगर आप ये समझे कि ये निपुण वॉजे, अगर इसको मैं कहूँ एयरप्लेन है, तो इस एयरप्लेन में जितने भी कल पुर्जे चाहिए होते हैं, यानी कि टूल्स हैं, सारे लोग इसमें जुड़ गए। एवरीबडी, ऑल ऑफ अस इन द लास्ट 10 days हैव क्रिएटेड ए इकोसिस्टम। और ज़रूरत क्या होगी अब इसकी? होता क्या है कि जब चीज़ें अच्छी हो जाए तो उम्मीद भी अच्छी हो जाती, ज़्यादा हो जाती है भाई। अब क्योंकि चीज़ें अच्छी हुई हैं तो हम लोग भी बड़े इससे वो हैं, आई मीन वी आर मच मोर, द टीम इज मच मोर मोटिवेटेड कि भाई इसको और अच्छा किया जाए। जरूरी ये है कि जो एटीएफ मेंबर, डीटीएफ मेंबर, गुरुजन यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, इसको ज़मीन पर उतारना है। यानी कि जो नॉलेज हमने एक्वायर की है, इस नॉलेज को अगर इसका जो रिलीवेंट पोर्शन है गांव में अगर मैं दे दूं, कम्युनिटी में दे दूं, तो इसका एक, जैसे मैंने शुरू दिन में कहा, जन आंदोलन बन जाएगा। और जरूरी ये है जन आंदोलन। अभी आप विश्वास मानिए, परसों की बात है, परसों हम भारत सरकार में यहाँ पर जो गांव, उधर पंचायत, पूरे देश से पंचायत के जो प्रधान वगैरह, ये पंचायत के जो सेक्रेटरी ऑफिशियल, इनका इन्होंने सम्मेलन बुलाया था पंचायती राज विभाग ने। तो मैंने, अच्छा, मुझे जब इस तरह की भीड़ मिलती है तो मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, और मैंने कहा मैं आऊँगा और निपुण की बात करूँगा। आई वॉज नॉट सपोज टू, आई वॉज नॉट शेड्यूल्ड टू स्पीक ओवर देयर। मैंने कहा भाई मुझे 10 मिनट दो, मैं इनसे अपनी बात कहूँगा। दे वर काइंड एनफ, दे गिव मी 10 minutes। आई वेंट ओवर देयर, तो मैंने इस निपुण की बात की। मैंने कहा भाई ये बताओ जी, अगर तुम्हारा बच्चा क्लास 2 में पढ़ता है तो कितना आना चाहिए उसे? तब कैसे माने, ये कैसे आप कैसे ये मानोगे कि आपका बच्चा क्लास 2 में पढ़ रहा है तो सही पढ़ रहा है? साल के अंत में जब रिजल्ट आ जाएगा तभी मानोगे पास फेल पे, बीच में कैसे पता चलेगा? तो आई टोल्ड देम कि भाई हम लोग निपुण से करने क्या जा रहे हैं। हमने उनको ये बताया कि भाई ये बताओ, व्हाट वी एक्सपेक्ट। यार बच्चा तो 24 घंटे में 8 घंटे हमारे पास है ना, 16 घंटे तो वहाँ है ना, पेरेंट्स के पास, कम्युनिटी के पास है। तो राउंडेड डेवलपमेंट, लेकिन क्या है, बिकॉज हमें पेरेंट्स और कम्युनिटी से क्या चाहिए, क्या अपेक्षाएं हैं, ये भी उसे बतानी है हमें यार। सारे अभी हम लोगों ने इसी 10 दिन के अंदर जब आपसे ये हम लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, तो हर एक की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हर एक से क्या उम्मीद है,
क्या उसे करना है, क्या उसका रोल होगा, इसकी एक अच्छी बुकलेट बनाई, आपके यहाँ भेज दी, आप तक मिलेगी, हमारी वेबसाइट पर है। तो क्या होता है कि इससे जुड़े जो लोग हैं, कम्युनिटी से क्या करना है, जो व्हेनेवर यू गो टू द विलेज, व्हेनेवर यू गो टू वो, या नॉट ओनली विलेज यार, अगर आप अपने डाउन द लाइन अपने जो नीचे के जो आपके कर्मचारी हैं उनसे भी बात कर रहे हो, उनको भी बता दें कि साहब निपुण ये है, तुम्हारे बच्चे को ये आना चाहिए, क्योंकि यार वो भी तो गांव का एक, ही इज ऑल्सो पेरेंट यार, ही इज ऑल्सो कम्युनिटी मेंबर, किसी न किसी गांव में रहता है, कहीं आसमान में थोड़ी रहता है यार, उसको भी अपना वो एक एम्बेसडर बनाए, ताकि वो जन आंदोलन ऐसे ही बनेगा यार, लोगों को तो बात वहां तक आएगी। और आप विश्वास मानिए कि जो हमारी जो मंत्रालय का बजट है, जो हर साल हम लोग राज्यों को पैसा देते हैं, हम लोगों ने इस चीज़ को तय कर रखा है तो नाम फाउंडेशनल स्टार्टिंग, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो राज्य जितना से ज़्यादा पैसा जो मांगेगा, इसमें सबसे पहली प्रायोरिटी उसको देंगे, सबसे ज़्यादा पैसा इस पर देंगे। जो राज्य या आप में कोई नई चीज़ सोचता है, उस राज्य को पैसा देंगे। क्योंकि जब यह मुझे पता चल गया कि भाई मेरी बीमारी का इलाज यहाँ से है, मैंने अपनी बीमारी को पकड़ लिया ना कि मेरी बीमारी यहाँ है, मेरी बीमारी ये है कि जो फाउंडेशन स्टेज पर हमारा बच्चा कमज़ोर है, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तभी वो बच्चा आगे परफॉर्म नहीं कर रहा, तभी वो बच्चा ड्रॉप आउट हो रहा है। ड्रॉप आउट क्यों होता है भाई गाँव में? भाई क्या होता है कि शुरुआती दौर में, आप सब लोग तो गुरुजन हो, बहुत अच्छी तरह जानते हो, देसी भाषा में है, शुरुआती दौर में अगर उसकी पढ़ाई उसको ठीक से समझ नहीं आई तो 8वें 9वें 10वें के बाद तो कंसेप्ट आने शुरू हो जाते हैं, लॉजिक आने शुरू हो जाते हैं। शुरुआती दौर में उसके फंडे गोल हैं, 8वें 9वें 10वें में फंडे लगाने पड़ते हैं, जब फंडे लगाने पड़ते हैं तो वो स्कूल नहीं जाता। अब उस समय क्या होता है कि शुरुआती दौर में जब हम भी पेरेंट्स रहे, अपने बच्चे को जो कहो मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन जब 8वें 9वें 10वें में बच्चा जाता है तो उसकी एक 15 साल का एज आ जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, वो बहाने बनाता है, माँ बाप से आर्गू करना शुरू कर देता है। और हम भी क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना कि ये कहा जाता है ना कि जब बाप के जूते में बेटे का पैर आना शुरू हो जाए तो बाप धीरे धीरे क्विट करता है। तो हम भी अपने उसके आर्गूमेंट के सामने थोड़ा कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। वो आर्गूमेंट क्यों दे रहा है? वो ना जाने के ऑफ द वेरियस रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन इज उसकी फाउंडेशन लेवल उसका ठीक नहीं था, और अब बड़ी क्लास आ गई तो उसको पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, एग्जाम्स होने लगे, बोर्ड होने लगे। तो इसलिए जरूरी है कि उसको हम इसको इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, इन द आवर इंटरेस्ट ऑल्सो, भाई अगर बच्चा, अगर आप ये सोचिए ना, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर वो बच्चा, हम लोग किसी न किसी मोहल्ले में रहते हैं, अगर उस मोहल्ले के बच्चे पढ़ नहीं पाए, उस समय के बाद क्या करते हैं? आवारागर्दी तो करते हैं, एंड विच इज थ्रेट टू आवर, मतलब हमारे लिए, मेरा भी इसमें स्टेक है। तो मेरा आप सबने बहुत मिलजुल कर बहुत अच्छा, वी एज ए टीम आर इन ए वे वेरी हाईली मोटिवेटेड। अब इसका हम लोग 1 नवंबर से 3 नवंबर तक इसका सेकंड फेज चलाएंगे, जिसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बात होती रहेगी, बट जो अपनी हमारी जो बात है, जो आप लोगों के बड़ी अच्छी श्रीधर साहब कह रहे थे कि अभी जो 8-9 दिन में आप लोगों ने बड़े अच्छे सवालात किए, यू पोज लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, उस क्वेश्चन से भी हम अपनी स्ट्रेटेजी को रिफाइन करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट को वर्केबल बनाएंगे। तो ये इसका एक बहुत वो है। और मेरा बहुत बहुत आप सब लोगों को धन्यवाद, साधुवाद। यू स्प्रेड योर, क्योंकि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण अगर चीज़ कोई है तो टाइम है, और कोई दुनिया में कोई चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आप सबने 9 दिन टाइम डिवोट किया अपना, तो इफ यू हैव डिवोटेड टाइम, तो उसके हम लोग उसके परिणाम ले। और एक बार फिर आप सबको बहुत, दिवाली प्रकाश का पर्व होता है, बहुत खुशियों का पर्व होता है। आप सब, आपके परिवार में
और हमारे बच्चे फाउंडेशनल स्टेज के बच्चों के जीवन में प्रकाश आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे सहज तरीके से सभी को धन्यवाद भी दे दिया और ब्लेसिंग्स भी दे दी। और सर एक बहुत ही अच्छी बात आपने हमें भी रिमाइंड करा दी कि हमें इन तक पहुंचानी है, वो है रोल बुकलेट। रोल बुकलेट सर, जो इस ट्रेनिंग का सेकंड फेज है, वो पूरा रोल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का क्या रोल है उसी पर हमने आधारित किया हुआ है, जो कि आप ही के सजेशंस के मुताबिक हमने डिज़ाइन किया था। और जैसे ही सर ये फेज खत्म होगा, हम लोग जल्द ही इस रोल बुकलेट को कि राज्य का क्या रोल है, एनसीईआरटी का क्या है, एनआरजी का क्या है, पीएमयू, एमयू, स्टेट मिशन डायरेक्टर का क्या है या नेशनल मिशन डायरेक्टर का क्या है, वो सारे रोल को हम एक छोटी सी बुकलेट बनाकर सभी तक पहुंचा देंगे और सब लोग उसको रोज पढ़ें। जो जिस कैटेगरी में आता है उसको रोज पढ़ेंगे तो उनको पता होगा कि हम ये 4 चीजें करें। सर ये आपका विजन है, इसको हमें करना है। कोशिश करेंगे कि नवंबर के मिड तक हम इसको, जैसे ही हमारा फेज 2 खत्म होता है, वैसे ही हम इसको कर पाए। तो सर ये जरूर करेंगे। एक बात सर आपके सामने लाना चाहती हूँ कि शुरुआत इसी की डिजाइन सोच आपकी थी और इसको, इस सोच में 2 बातें हुई। इस ट्रेन 9 दिन का जो ट्रेन फर्स्ट फेज चला इसमें बहुत अच्छी 2 बातें हुई। एक तो ये जो लॉन्च हुआ कल फाउंडेशनल स्टेज के एनसीएफ का, वो हुआ। तो एक ऑस्पिशियस डे, जिसको टाइम है वो चल रहा था, शायद इसलिए ये हुआ। अदरवाइज तो कितने समय से तैयार हो रहा था, हुआ नहीं। जब हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला उसी बीच में ये भी आया और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को हमने लिंक शेयर किया था और सभी ने इसको देखा है और बहुत अच्छा फीडबैक दिया है। दूसरा सर, एक जो आपके ही माध्यम से हमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी अप्रोच किया था कि अब हमारे इस निपुण के प्लेटफॉर्म को लोग इतना ज्यादा सराह रहे हैं और वो बहुत थैंकफुल थे। कई बार उन्होंने कहा कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। तो सर इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद और दूसरा हमारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी जो लिंक है या हमारी जो बातें हैं आगे तक पहुंचाई है। इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आई है, तो इसके लिए धन्यवाद पार्टिसिपेंट्स को भी। सर आप यहाँ हैं, आपके जाने क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है सर, मुझे लगता है कि आप रेस्ट करें। लेकिन सर आप 2 मिनट 2 बातें मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जिसकी एग्रीमेंट भी आप ही ने दी है। ये एक अनाउंसमेंट है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। एक तो ये कि सर इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का पार्ट बनाएंगे। ऐसे ही 1-1 2-2 घंटे के का समय बीच बीच में ब्रेक में, हर महीने या हर महीने नहीं भी पॉसिबल, हर 2-2.5 महीने के बीच में एक कुछ 4-5 दिन का ऐसा स्लॉट निकाल के 1-1 2-2 घंटे के सेशन रखें, जिससे सभी लोगों के लिए आसान हो इसको अटेंड करना। और यूट्यूब लिंक के द्वारा दूसरा एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करने के लिए भी आपने हमें परमिशन दे दी है सर। एक तीसरा हैशटैग, जिससे कि अगर कुछ नया आ रहा है तो सबको पॉपअप हो जाए। तो सर ऐसा जो विजन आपने दिया है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के शुरुआत के साथ ही, मुझे लगता है कि सभी पार्टिसिपेंट्स को और पूरे देश में निपुण भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में ये एक बहुत अच्छा कदम होगा। तो इसी के साथ सर का बहुत धन्यवाद। और पार्टिसिपेंट्स, मैं चाहती हूँ कि अब फीडबैक देने का समय आ गया है। आपके चैट बॉक्स में मैं देख रही हूँ, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक लिखे हैं। चाहूँ कि चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, देखिए आप जब नेगेटिव देंगे तो उसको सजेस्टिव वे में दीजिएगा कि हम कैसे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी सेकेंड फेज हमारा आने वाला है, वो है 1st से 3rd का, जिसमें आपके रोल्स पर बात हम करेंगे। तो उसमें भी अगर आपको लगता है, इफ यू रियली थिंक दैट समथिंग मोर कैन बी एडेड, सम अदर सेशंस कैन बी टेकन विच आर इम्पोर्टेंट फॉर यू, स्पेशली फॉर एटीएफ एंड डीटीएफ मेंबर्स, उसको भी आप उसमें हमें सजेस्ट कर दिए चैट बॉक्स में। हम इसकी कॉपी कर लेंगे और इसी के हिसाब से आगे की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को भी हम डिज़ाइन करेंगे आपके लिए। तो आप अपने जो कमेंट्स, अगर आप हमें अपना माइक ओपन करना चाहते हैं, यू कैन रेज योर हैंड्स। अपने जो भी फीडबैक है वो देना चाहते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। लेकिन चैट बॉक्स में भी ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इसको हम डॉक्यूमेंट भी करेंगे। वी विल कम आउट विद अ रिपोर्ट। तो इसी के साथ आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर योर फीडबैक। सर आप लीव कर रहे हैं मीटिंग क्या? हाँ, मुझे इजाज़त दे दें आप लोग तो जी बहुत। सर, जी आप रेस्ट कीजिए सर, यू आर नॉट वेल। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग अस ब्लेसिंग।
एनीवन, आप अपना हाथ रेस कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे, लेकिन चैट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। रूपाली जी कुछ पूछना चाहिए कर दी। यू आर नॉट ऑड, आपको आ रही? रूपाली जी मैं सुन नहीं पा रही आपको। Rupali ji, are you there? रूपाली जी, अब आपको आ रही है मेरी आवाज? आप मुझे सुन? अच्छा अच्छा, प्रमोद जी को कर दीजिए। हाँ अच्छा, रूपाली जी को दोबारा जोड़ लेंगे। प्रमोद जी। जी नमस्कार मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सेशन रहा। हम लोगों ने पूरी व्यस्तता के बाद भी हर सेशन को अटेंड करने का प्रयास किया। आप इसमें अच्छा ये था कि आपने अलग अलग स्टेट को जो मिनट्स लिखने की जिम्मेवारी थी उससे हमारी भी जिम्मेवारी बढ़ गई और हमें लगा कि हमारा पार्टिसिपेशन भी बेहतर हो रहा है। इस बहाने हम लोगों को लगा कि हम लोग इससे ऑनलाइन होने के बावजूद भी हम लोगों को लगा कि हम लोग फिजिकली जुड़े हुए हैं। एक रिक्वेस्ट है मैम, एक तो जो मिनट्स हैं जैसे हम लोगों ने लिखे थे ये कंपाइल होके ये हमारे पास आ जाएं, वो हमारे लिए ना गाइडलाइंस बन जाएंगी। एक तो ये रिक्वेस्ट है क्योंकि इसमें बहुत सारे। अच्छा दूसरा, अगर मैम इस दौरान जैसे क्वेश्चन पूछे हैं अगर हम लोग इसको एफएक्यू में कन्वर्ट कर लें तो हमारे काम आ जाएगा। हमारे टीचर के लिए हम लोग एफएक्यू डेवलप कर रहे हैं, वो बना बनाया हमारे को मिल जाएगा। ट्रांसलेट हम हिंदी में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा की तरह हम लोग जो है तैयार है। लेकिन एफएक्यू मुझे इसमें सबसे प्यारी चीज लगी, लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन लोगों ने पूछे, वो एक एफएक्यू बनेगा बहुत बढ़िया। और उसमें मिनिस्ट्री जो है उसको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए स्टेट को दे देगी, तो ये हमारा रिसोर्स बन गया। तीसरी मैम सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कल आप लोगों ने इसकी जो निपुण के जो करिकुलम की जो लॉन्चिंग कराई है, मैं आज उसी को पढ़ रहा हूँ। बहुत शानदार डॉक्यूमेंट है मैम, अगेन आपकी पूरी टीम को बधाई। मतलब 300 प्लस पेजेस का डॉक्यूमेंट, जैसे मैं कहता था ना पिछले डॉक्यूमेंट के बारे में, विद्या प्रवेश के डॉक्यूमेंट के बारे में बोलता हूं, जैसे मैं कह रहा हूं इस डॉक्यूमेंट में भी सब कुछ है। हम लोगों को एज ए स्टेट कोऑर्डिनेटर, एज ए स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट, हम लोगों को अलग से कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हम इस डॉक्यूमेंट को उठाएं, इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा हुआ है, पेडागोजी को लेके, करिकुलम को लेके, कंटेंट को लेके, मेथोडोलॉजी को लेके, रिसोर्स को लेके, लर्निंग मटेरियल को लेके, टीएलई टीएलएम एवरीथिंग इसके अंदर है। तो इसके लिए भी आप लोगों को बहुत शानदार डॉक्यूमेंट आपकी टीम ने जो तैयार किया, इसके लिए आपको बधाई। और मैडम आपकी प्रेजेंटेशन जो थी कल वो बहुत शानदार थी। मतलब हम लोगों ने कल तो लाइव हम लोग रहे, आज भी हमारी पूरी टीम बैठी, हम लोगों ने देखा। बहुत बहुत आभार, ऐसी ट्रेनिंग्स करते रहिए, बहुत बढ़िया है। अभी एएस साहब जैसे कह रहे थे इसको जन आंदोलन बनाना है, ये जन आंदोलन तभी बनेगा मैम जब हम लोग सारे मिलके एक लाइन पे काम करेंगे, एक टाइम टेबल पे काम करेंगे। हम सब लोगों की शेयरिंग वाली स्ट्रेटजी होगी, एक दूसरे के साथ एक फील्ड विजिट करके एक दूसरे को मिलके एक दूसरे से सीख के उसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच मैम। तो मैं ऐसी आशा करूंगा, शुरुआत की जो 2 चीजें हैं एफएक्यू की मुझे जरूरत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके ऐसा करते हैं ना, जैसे जैसे फीडबैक आ रहा है उसका फिर फीडबैक देती जाती हूँ, ठीक है। तो पहले तो धन्यवाद, इतना तारीफ कर दिया आपने डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट अभी ड्राफ्ट है, उसको उस पर कॉमेंट्स भी आने हैं, पर अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि आप सबको पसंद आ रहा है। और प्रेजेंटेशन की जहाँ तक बात रही, वो प्रेजेंटेशन जो पीपीटी है वो भी सेक्रेटरी मैम ने बनाया था और बहुत सुंदर बनाया था। मैंने इसीलिए सभी के साथ शेयर कर दिया है ताकि आगे एक क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं कम्युनिकेशन गैप हो गया वहाँ यू विल नॉट लर्न, है ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लगा कि एक तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा बहुत जरूरी है। फेस टू फेस होता है तो आप आते करेंगे फेस टू फेस। आप यहाँ जब ये ऑनलाइन होगा और यूट्यूब चैनल क्रिएट होगा तो सब तक सेम इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। बाकी आप लोग स्टेट में आगे बढ़ते जाइए, काम करते जाइए, पर एक
बेसिक इन्फॉर्मेशन सब तक एक जैसी पहुंचे। तो लिंक जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना अच्छा। ऐसे ही प्रोग्राम हम करते रहेंगे। सर ने तो दे ही दी है पूरी परमिशन कि यूट्यूब चैनल चलाओ, जो करना है करो, इसको बढ़ाओ बस। तो एकदम फ्री हैंड दिया हुआ है हमको इसमें, तो उसके लिए तो सर का बहुत धन्यवाद। तो आते हैं पहला क्वेश्चन, एफएक्यूज को आपसे ज्यादा हमको जरूरत है, क्योंकि हम लोग भी सोच रहे थे एफएक्यूज बनाने के लिए। अब बात यह है कि आपने क्योंकि अपना हाथ एक्सटेंड कर दिया है, सहायता का हाथ जो बढ़ाता है तो हम उसको खींच लेते हैं। आपको पता है, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा हमारा। तो अब जो है बनाएंगे आप, ठीक है? हम आपको सारा मसाला देंगे, हम विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। विल आल्सो रिक्वेस्ट द स्टेट ऑफिशियल्स, आपके जो और भी साथी हैं अदर स्टेट्स में, उनको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म से कि आप लोग क्वेश्चंस प्लीज बनाएं और कोशिश करें कि अगर उसमें हमें सहायता करें, क्योंकि सारी चीज वापस आप तक जाएंगे बुक के फॉर्म में, वापस आप ही को मिलने वाला है। तो अपने स्टेट स्पेसिफिक कोई इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, और उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं वो भी करें, हमारे प्रमोद जी की हेल्प हो जाएगी। तो प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी अगर बनाकर दे देंगे तो आप डायरेक्टली प्रमोद जी को भी भेज सकते हैं, कॉपी टू मुझे कर दे, मुझे डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, किसी भी तरीके से आप करें। तो आशा करते हैं कि प्रमोद जी का सहयोग इसी में रहेगा। और बिल्कुल हम हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी में भी बनाएंगे इसको। बाकी फिर हमारे स्टेट, अदर स्टेट का जो है उनका उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि फिर अपना ट्रांसलेट कर लेंगे। दूसरा, मिनट्स बनवा ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं लेकिन उसका कहीं डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, ठीक है? तो इस बार हमने सोचा, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 3 लोग हैं हम यहाँ पे, सिर्फ 3 लोगों से चल रहा है सारा। तो और हमारे बॉस सर जो है, तो 4, तो उनसे चल रहा है। तो हमें लगा कि आप लोगों से को जोड़ेंगे तो एक तो ये होगा कि हमारा काम आसान हो जाएगा। दूसरा चीज है, आप कम से कम एक अटेंड तो हमारे हमारे जो भी स्टेट ऑफिशियल्स हैं, जो हमारे कर्णधार हैं निपुण के, वो कम से कम एक सेशन तो अटेंड कर ही लेंगे अच्छे तरीके से, तबीयत से। यही उद्देश्य है। तो इसलिए उसमें आपकी चॉइस भी थी कि आप किसी के साथ स्वैप भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसका मिनट्स नहीं, इसका रिपोर्ट बनेगा प्रॉपर। और आपके फिर फीडबैक आप इसको यहाँ लिखिए, ये फीडबैक भी कोट करेंगे, इसमें से हम कुछ सेलेक्ट करके इसको कोट करेंगे कि इस तरह से ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था, इसको फिर हम डिसैमिनेट करेंगे। तो ये दोनों आपके प्रश्न का उत्तर। जी, एक बार रूपाली जी को बुला लेते हैं, फिर मंजुला मैडम भी यहाँ हैं, रूपाली जी को बुला लीजिए। Very warm good evening to all. I hope I'm audible. Am I audible, ma'am? Yes, you are. सबसे पहले तो मैम मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगी फॉर हैंड होल्डिंग, फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ट्रेनिंग सो ब्यूटीफुली। इसमें हज़ारों लोग जुड़े हैं, मैं हज़ारों शायद कम कह रही हूँ, नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम टेम्पलेट से लेके, ट्रैकर से लेके, हमारी छोटी छोटी क्वेरीज जो इन सब चीज़ों में थी, इस मिशन को इम्प्लीमेंट करने में थी, आपने सच में एक हमें सबसे बड़ा सपोर्ट था कि मैम इज़ देयर, तो हम सब चीज़ें कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। और जैसे हमारे एएस सर ने कहा कि इसको अब हमने ग्रास रूट लेवल पर लेके जाना है, और फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इज देयर, तो सबसे पहला दिया जो है वो, बल्कि हजारों दिए आपने जला दिए, तो अब उन दियों से आगे रोशनी हम पूरे भारत में कर सकते हैं। और एफएक्यू का जो बात अभी हो रही थी, तो वी आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, और ये प्रॉमिस है टीम चंडीगढ़ का मैम के जो भी हेल्प हम इसमें कर पाएंगे आपकी, वो डेफिनेटली हम करेंगे। एंड वी प्रॉमिस यू कि हम अपने यूटी में इस मिशन को ग्रास रूट लेवल पर इम्प्लीमेंट करेंगे। एंड वी प्रॉमिस यू कि हर बच्चा बच्ची, जैसा कि हमारे प्लेज में है, हर बच्चा बच्ची जो है हमारा, वो डेफिनेटली पूरे भारत का निपुण बनेगा। तो आपको और आपकी टीम को मेरा दिल से धन्यवाद है कि आपने हमारे लिए ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराई, और आपने हमें हमेशा इसके लिए सपोर्ट किया है। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, Rupali ji. Thank you very much, and I'm really happy that you have extended your hands. So, प्रमोद जी, आपका काम आसान हो रहा है। अब आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल गया, और यहाँ पे पता चल रहा है कि एमपी हैज आल्सो प्रिपेयर्ड एफएक्यू। तो हाँ, तो मुझे लगता है कि सारे ही स्टेट अगर छोटा छोटा एफएक्यू बनाकर हमें दे दें, तो हम उनको कंपाइल करके
कुछ अपनी इंफॉर्मेशन भी उसमें ऐड करके और फिर एक एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट दे दें, तो मुझे लगता है देश में जो इम्प्लीमेंटर्स हैं निपुण भारत मिशन के, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात हम दे पाएंगे। तो ऐसा करते हैं, 10 नवंबर टारगेट रख लेते हैं, क्योंकि टारगेट देना जरूरी है। तो आप में से जितने भी स्टेट्स में जो लोग आप सहयोग कर सकते हैं, आप लोग 10 नवंबर तक हमको जिस भी फॉर्म में आप चाहते हैं उस फॉर्म में हमको ये FAQs दे दें विद सॉल्यूशंस, आपके अपने स्टेट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के साथ हमको दे दें। जितनी जल्दी आप देंगे ना, इस हाथ ले उस दे दे, तो जितनी जल्दी आप देंगे उतनी तेजी से हम आपको वापस इसको भेज देंगे, है ना प्रमोद जी? रेडी है जी आपकी मैम, टीम? यस मैम, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ मंजुला जी। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। ये मेरे भी 21-22 साल के करियर में पहली बार हुआ कि इतने बड़े स्तर पर ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की। हालांकि ये वर्चुअल ट्रेनिंग थी, पर ऐसा लगता था जैसे फिजिकल ट्रेनिंग हो रही है, हम वहीं बैठे हैं। और बड़ी तबीयत से मैंने तो सुना है। मुझे तो नहीं लगता कि मैं एक भी सेकंड के लिए कहीं गई हूँ बीच में। पूरा सुना और अच्छे से सुना। कई बातें ऐसी थी जो रिपीट हुई हैं और मुझे रिवाइज हुई, रिफ्रेश हुई मैं। और जो मेरे टास्क फोर्स के मेंबर हैं, वो क्योंकि हमारे रिसोर्स ग्रुप के मेंबर भी कई उसमें हैं, तो वो लोग भी एक बारी जो हमसे सुनते रहे, उनको नेशनल लेवल से सुन करके एक वो जो बात होती है ना, रीइंफोर्स होती है वो। उनको लगता है कि जो ये बोलते हैं ना, यही है बात जो नेशनल लेवल के लोग भी बताते हैं। तो वो एक रीइंफोर्समेंट होती है, वो रीइंफोर्समेंट हुई। उसके लिए मैं सोचती हूँ कि बहुत खुशी हो रही है। दूसरी बात ये है कि जैसा प्रमोद जी ने कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है मैम, जब हम फील्ड में जाते हैं ना, तो टीचर्स को बड़ी सारी बातें नहीं पता होती हैं। क्या हो रहा है, ये करिकुलम फ्रेमवर्क आ रहा है, अभी निपुण के लक्ष्य आ रहे हैं, अभी लर्निंग आउटकम आ रहे हैं, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है। तो वो एक एक अलग अलग चीजें उनके पास ऐसे बरसती है कि वो समझते हैं कि ये हो क्या रहा है भाई, करना क्या है। उसने तो सिर्फ पढ़ाना है, उसको तो ये पता है कि मैंने बच्चे को सिखाना है और वो फाउंडेशनल लिटरेसी सिखानी है। पर ये जो बातें ऊपर ऊपर से आ रही हैं, वो भी इंपॉर्टेंट बड़ी होती हैं, पर उनको उनको क्योंकि बहुत सारी बम्बार्डमेंट होती है शब्दों की, तो वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जब इस तरह के FAQ बनते हैं, तो उनका कंफ्यूजन दूर होता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, जो फायदा, जिससे फायदा होने वाला है। मुझे संध्या संगई मैडम दिख रही हैं। बहुत अच्छे सेशन, मतलब सारे सेशन, इतना मजा आया मुझे दे सुन करके। सभी को सुना है, संध्या संगई मैडम को सुना है मैंने, और जितनी भी टीचर जितने भी हैं, सबके साथ बातचीत पहले भी सुन रखा है। तो इतना अच्छा लगा कि मेरे को लगता है कि नेक्स्ट जब ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग होगी, एक नए जोश के साथ अपने टीचर्स के बीच जा सकूंगी, एक नए जोश के साथ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैडम से कि फिजिकल ट्रेनिंग भी इस तरह से हो, कभी हम इकट्ठे मिल करके सभी स्टेट्स के लोग आकर के यहाँ पर आपसे बातचीत करें, आप लोगों से। NCERT जो एपेक्स बॉडी है देश की, उसके सभी फैकल्टी मेंबर्स हमारे साथ हमें ट्रेंड कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं, एक साथ एक ट्रेनिंग में बात कर रहे हैं। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। इससे बड़ी, इसके लिए तो रितु मैम आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मतलब हमारे लोग कहते थे ये जो स्टडी हुई FLN की, क्या है मैडम, क्या है मैडम। तो कल इतने खुश थे कि वो फोन करके मुझे बता रहे थे, मैडम अब समझ में आ रहा है और हम देखेंगे क्या है, स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें टीचर्स खुद कर रहे थे, तो उनको लगता था पता नहीं ये भी कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं होती। पर जब उनको अलग अलग टीचर्स ने आके एज रिसोर्स फैकल्टी बताया, तो वो अपने आप को सोच रहे थे कब बताएं, हम भी ऐसा करते हैं। तो वो मुझे बहुत सारे वीडियो भेज रहे थे, देखो मैडम हमने किया अपने स्कूल में। तो ये बहुत बहुत अच्छा मुझे लगा इस पूरी ट्रेनिंग में। मुझे लगता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बना है FLN का, उसके लिए हमें जो हमारे स्टेट के जितने भी नोडल ऑफिसर्स हैं, एक बार उनके साथ बैठ करके डिस्कशन हो, ताकि हमारी समझ बड़ी पक्की हो। हमारी समझ पक्की होगी, तब नीचे सही तरीके से ट्रिकल डाउन होगा। अदरवाइज वो हमारे तक ही रहेगा और हम भी थोड़े कंफ्यूजन स्टेट में जो चीजें पता है वही आगे बता सकेंगे। तो एक ऐसी डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कहीं हम जाए और उनको, किसी भी टीचर को स्कूल में जाकर के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के बारे में बता पाए। तो आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।
एक भी सेशन मैंने मिस नहीं किया, एक भी सेशन मिस नहीं किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मंजुला मैडम। आपकी भी बात का एक बार जवाब दे देते हैं। तो एक तो रही हैंड होल्डिंग की बात, बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा मतलब शायद इतनी बड़ी वो ट्रेनिंग नहीं थी, पर आपने बहुत तारीफ की, आप सब लोग बहुत खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। तो थैंक यू उसके लिए। एक जो बात कहना चाहती हूँ कि एनआरजी की लिस्ट हमने आपको पकड़ाई है, तो ये ऐसा नहीं है कि वर्चुअल ट्रेनिंग कर दी तो एक्सपर्ट्स को हम दोबारा नहीं सुनेंगे। आपको फ़ोन नंबर, उनके ईमेल आईडीज़ भी दिए गए हैं। अगर आप एनेक्जर 1 खोलेंगे, उस डॉक्यूमेंट का जो आपको एटीएफ डीटीएफ का ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें एनेक्जर 1 खोलिए, उसके अंदर उनके फ़ोन नंबर है, कॉल देम, उनको फ़ोन करिए, परेशान कीजिए, उनकी ड्यूटी वही है, काम ही वही है उनका। उनको पूरा उनसे आप जिसने जो सेशन लिया है, खासकर उस सेशन पे उनको फ़ोन करके व्हाट्सएप पे परेशान कीजिए। निपुण भारत इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, हर बच्चा को निपुण बनाना है, तो एक ड्यूटी तो ये आपकी है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि एफएलएस की जो स्टडी की बात है, आपने बहुत अच्छा मुद्दा रखा कि लोगों को अभी उसमें और समझ बनाने की ज़रूरत है कि कैसे उस स्टडी को और यूटिलाइज़ किया जाए। तो थैंक्स टू राशि मैम, शी बिजी थी बट वो शी अग्रीड कि एक बेसिक हम इंफॉर्मेशन दे दें कि एफएलएस क्या है। अभी बहुत जल्दी हम लोग एफएलएस के ऊपर एक एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं, और वो राशि मैम ही प्लान कर रही हैं। तो हो सकता है वो फेस टू फेस हो, मुझे अभी इसका मोड नहीं पता। आई थिंक डेट्स हैव्स टू बी डिसाइडेड, और बहुत जल्द वो भी आपके सामने होगा कि एफएलएस स्टडी पे हैंड होल्ड कैसे करें, कैसे स्टेट्स को समझाएं। उस पर काफ़ी 4-5 दिन का शायद प्रोग्राम होने वाला है, तो ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। तीसरा रही एनसीएफ की जो बात है, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पे अभी फीडबैक भी ले रहे हैं। दूसरा चीज़ है, इस पर बहुत जल्द इस पर भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किया जाएगा। लेकिन इस पर फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एनआरजी की टीम है पूरी, उस एनआरजी की टीम से भी आप हैंड होल्ड कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर सब कुछ आपके पास है। बहुत जल्द हम एक एक्सटेंसिव विद्या प्रवेश पर भी प्रोग्राम करने वाले हैं। तो विद्या प्रवेश सब लोग अपने अपने तरीके से चला रहे हैं, तो एक सोच पर बात करेंगे, एक डॉक्यूमेंट पे बात नहीं करेंगे। हम एक सोच पर एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाले, जिसका भी सेक्रेटरी मैम ने अप्रूवल दे दिया है। ये उन्हीं की तरफ से भी इनफैक्ट सजेशन आया है। तो ये नए डेवलपमेंट्स है, तो ट्रेनिंग तो होती रहेगी। आप ज्वाइन करते रहिए, जुड़े रहिए हमसे, और आगे भी ट्रेनिंग के जो फीचर्स हैं, जो उसके जो हम कहना चाहते हैं, उसको और आगे तक पहुंचाइए। संध्या मैम कुछ कहना चाहती हैं? मैं चाहती थी कि संध्या मैम को मैं अंत में बुलाऊं एकदम फाइनल, या अभी कहना चाहती हैं? ठीक है। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारे यहाँ भी कुछ वो अरेंजमेंट किया हुआ है एक दिवाली सेलिब्रेशन का भी, और हमने टाइम भी फिक्स किया था 4 तक के बीच का। तो जल्दी जल्दी क्विक क्वेश्चन जल्दी से फीडबैक देके और चैट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, ताकि हम इसको डॉक्यूमेंट कर पाए, ताकि हम इसको टाइम पे 6-7 मिनट में ख़त्म कर दें फीडबैक, क्योंकि अभी हमें फिर मिलना है, इट्स नॉट एंड, सेकेंड फेज, फर्स्ट को मिलना है, दिवाली के बाद भी है। जी मैडम, इनको कमला मैम, अच्छा हाँ जी। हेलो, नमस्ते मैम। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ मुझे बताना है कि बहुत अच्छा वर्कशॉप आपने अरेंज किया, तो रितु मैम आपका और आपकी टीम का। आवाज आ रही मैम? आ रही है, आप बोलिए। हाँ, तो बहुत ही अच्छा वर्कशॉप आपने अरेंज किया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराष्ट्र की सभी टीम की ओर से। और एक बात बतानी थी, वैसे तो पहले लगा था कि वर्चुअल ट्रेनिंग है तो कैसा होगा, और 9 दिन हमें हर एक सेशन सुनना है, तो ये पॉसिबल हो जाएगा कि नहीं। लेकिन बहुत जैसा कि सभी ने बताया, बहुत अच्छा वर्चुअल होते हुए भी ये ट्रेनिंग बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है, बहुत अच्छे सेशंस है, और ये यूट्यूब पे है, इसलिए हम अगर चाहते हैं तो फिर भी सुन सकते हैं। और एटीएफ और डीटीएफ का एक पहली बार ये ओरिएंटेशन हो गया, इसलिए ये बहुत अच्छा काम आएगा, सपोर्ट करेगा हमारी स्टेट की काम में। और एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमारे महाराष्ट्र की एससीईआरटी में हम निपुण मित्र का एक वर्कशॉप हमने अरेंज किया था, कि जो हमने मेंटोर पूल क्रिएशन के लिए जो निपुण मित्र आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसके लिए जो एक मॉड्यूल मेकिंग का वर्कशॉप हमने इसी बीच में ऑर्गेनाइज किया था। तो उस और वर्कशॉप में हमने आपके कुछ सेशन ऑनलाइन उस सभी स्कीम को दिखाए,
तो ये भी हमें बहुत हेल्पफुल रहा है मैम। और मैं भी आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये फेस टू फेस ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि सब लोग मिले, और जैसा कि सभी स्टेट का जो शेयरिंग है वो हो जाएगा। हमने पूरे स्टेट में डीटीएफ का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, डीटीएफ मेंबर का। और इसके लिए जो कम्युनिकेशन है, आपने जो भी कम्युनिकेशन करने के लिए कहा, वो करने के लिए हमें आसान हो गया एक व्हाट्सएप ग्रुप के दौरान। तो लास्ट में आप सभी को बहुत धन्यवाद और हैप्पी दिवाली। थैंक यू मैम। हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू फॉर गिविंग अ वेरी गुड फीडबैक। डिमांड तो आ रही है फेस टू फेस, डेफिनेटली ये फेस टू फेस हम करेंगे। द only issue is that some of the states have not yet constituted DTF and ATF। तो आपकी जहां ATF हो गए हैं उनकी जिम्मेवारी है कि वो DTF इंश्योर करें कि उनके स्टेट में, उनको बोलो 5 मिनट रुके, बस ये फिनिश कर रही हूँ मैं 5 मिनट। सो जहां कहीं पे DTF सेटअप नहीं हुए हैं, ATF की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें, और जहां कहीं ATF नहीं हुए हैं उनको इंश्योर करें कि आपने ATF मेंबर्स, ATF कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, PMU है, कमेटी है, सब आप कमेटी बना लेंगे, और हमारे 22 इंडिकेटर को जिस दिन 100% पूरा कर लेंगे एकदम बुलाएंगे, और फिर वो हीट चार्ट हम नहीं दिखाएंगे, हीट चार्ट बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। 100% कंप्लीशन कर लीजिए जल्दी से। बहुत जल्द हम प्लानिंग कर रहे हैं कि स्टेट ऑफिशियल्स को बुलाए, अपने ATF की ट्रेनिंग एटलीस्ट हम फेस टू फेस मोड में करें, तो जरूर करेंगे। श्योर मैम, थैंक यू मैम। सादिक जल्दी से। हेलो रितु मैम, हेलो मैम। सारे पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच मैम आपकी तरफ से जो ट्रेनिंग चलाया। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। 2 लाइन में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेरा फ्लीज आप देख रहे हैं इतने मोटे पहनकर, वो 15,000 फीट से बात कर रहा हूँ लद्दाख से। इस ट्रेनिंग के द्वारा मुझे तो ये लगा, बाकी स्टेट्स की तरह लद्दाख से इतने पार्टिसिपेंट्स नहीं थे, लेकिन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनकी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक चीज़ मुझे यहाँ से ये अच्छा लगा कि जिनका मुझे हमेशा हेल्प मिलते हैं, हमारा प्रमोद सर यहाँ है, मंजुला जी है, निपुण नूडल्स है, मैं हमेशा उनका मदद लेते रहता हूँ, और उनका फेस यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी मिली, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी उनका सपोर्ट बने रहेंगे। और एक चीज मैं उन नॉडल से जो इन टच नहीं रहते उनसे ये बात मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके द्वारा, इस प्रोग्राम के द्वारा, कि ये कहूंगा जो भी एक्टिविटीज स्टेज में होते हैं, क्योंकि लद्दाख एक नया यूटी है, हम कुछ नहीं से हम सीख रहे हैं, तो अगर वो जो एक्टिविटीज जो इनिशिएट करते हैं अगर वो ग्रुप में शेयर किया करेंगे तो हम सब के लिए, और एक साथ में एक प्रोग्रेस हमें एफएलएन को लेकर, निपुण भारत को लेकर देखने को मिलेगा। मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, या चाहे हमारा ये वर्कशॉप हो या वर्कशीट्स पे काम करते हो या असेसमेंट पे काम करते हो, इन चीजों में ये हम सब के लिए बहुत, मेरे लिए स्पेशली मैं चाहूंगा कि सब मेरे साथ मदद करते रहें, जैसे कि प्रमोद मंजुला जी करते हैं। मैं इनका बहुत बहुत ब्रेक हो गई शायद आवाज, है ना, ब्रेक हो गई। शुक्रिया अभी तक। थैंक यू सादिक, थैंक यू। अब मैंने तो अब आइडेंटिफाई मैंने भी कर लिया है कि हरियाणा से प्रमोद जी और हिमाचल से मंजुला जी। अब मुझसे कोई कुछ भी प्रॉब्लम पूछता है तो मैं डाइवर्ट कॉल होती है ना, अब वैसे कर देती हूँ। आपको आने लग रहे होंगे फोन अब बहुत सारे, है ना, बस। तो अब आपसे सबको, आपसे सहयोग, आप दोनों से सहयोग की अपेक्षा है। आप में से और भी स्टेट ऑफिशियल्स जो हमें सहयोग करना चाहते हैं और कॉल डाइवर्टेड कॉल पाना चाहते हैं, प्लीज एक्सटेंड योर हैंड्स, बिकॉज आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। बस जरूरी है कि अदर स्टेट्स को भी आप सपोर्ट करें, सजेस्ट करें, और इसी तरह से एक्नॉलेज किए, देखिए जैसे सादिक ने किया है, ऐसे ही एक्नॉलेजमेंट हम सबको मिलता रहे, यही आशा है। जी आप और कौन है? बुद्धदेव जी। जी बुद्धदेव जी। बुद्धदेव जी बोलिए। हाँ मैडम। जी बोलिए। एम आई ऑडिबल मैम? यस यस, यू आर ऑडिबल। मैम असंख्य धन्यवाद आपको। ये 9 दिन जो ट्रेनिंग सेशन हुआ बहुत अच्छा लगा।
और एक बात जानकारी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। इस साल का नेशनल अवार्ड टू द टीचर्स का मैं अवार्डी हूँ वेस्ट बंगाल से, और सभी को धन्यवाद। और इस 9 दिन में बहुत कुछ सीखा है। मेरे स्टेट के जो हैंडबुक बनाया जा रहा है FLN के हिसाब से लर्निंग आउटकम को मद्देनजर रखते हुए इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हैंडबुक तैयार हो रहा है। तो मैं नेक्स्ट सेशन के लिए बहुत आग्रह प्रकाश करता हूँ, आपका जो भातृ द्वितीया का बाद जो होगा। और मैं दीर्घों दिन से स्टेट लेवल में काम कर रहा हूँ, तो मैं ये एक सजेशन देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट रखना चाहता हूँ कि जो ऑल द ATF मेंबर्स 29 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटोरियल जो है उसको उस मेंबर्स को ATF मेंबर्स को लेकर एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए डिस्कशन करने के लिए। कुछ अगला जो कार्यक्रम और कुछ डिस्कशन के लिए ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। मैं मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है। और सभी NCERT ऑफिशियल्स एवं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिशियल्स सभी को और खुद को आपको रितु जी को मेरे तरफ से ढेर सारे नमस्कार बधाई। इतना अच्छा प्रोग्राम को कम हुआ है और इतने सारी टीचर्स और मेंबर्स इसमें जुड़े हुए हैं। सभी को मेरे तरफ से प्रणाम नमस्कार, धन्यवाद मैम। धन्यवाद बुद्धदेव जी, बहुत अच्छा सजेशन आपने दिया है। लेकिन हमारे साथ बस वही है कि सारे स्टेट्स ने बनाया नहीं है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। दूसरा चीज़ हमारे पास कोई ऐसी अभी तक हमने सोचा भी नहीं कि हमारे पास ATF का कुछ ऐसा ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि हर बार मेंबर्स चेंज होते रहते हैं। मैन पावर भी कम होने की वजह से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सबकी क्वेरीज को रीच आउट, इसलिए हम स्टेट को कांटेक्ट करते हैं हर बारी। पर अच्छा सजेशन है, आगे जैसे ही हमारे पास मैन पावर बढ़ेगी हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि ATF का एक ग्रुप, एटलीस्ट ATF का ग्रुप तो बनाएं। अभी तो आप जो हम DO लेटर वगैरह लिखते हैं वो आप तक एकदम पहुंच जाता है, ये मुझे पता है। तो उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए, कुछ समय हमें दीजिए, 2-3-4 महीना शायद लग जाएगा इस बात को सेटल करने में। जैसे ही आएगा हम लोग जरूर बनाएंगे और आपको उसमें जोड़ देंगे। इसी के साथ रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि सभी स्टेट अपने ATF एंड DTF को बनाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक सारी बधाई आप मुझे ही दे रहे हैं, मेरे साथ दो, मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इधर है, इधर देखिएगा। कैमरा अभी डिस्कनेक्ट हो जाऊं पता नहीं, इधर है, ये बैठे, ये देख लिए, उधर जुड़े हुए हैं आप लोगों से। ये है विनीता और राजेंद्र, ये करते हैं सारा काम, ये है, पहचान आ गई ये दोनों। तो क्रेडिट गोज टू देम, ये लोग सारा दिन रात मीटिंग में हो कहीं भी हो, दे आर द वन हु हैंडल एवरीथिंग। तो इसलिए सेशन तो इन्होंने भी सारे अटेंड किए, जो क्वेरीज हो इन्हीं से पूछ लेना आप, ठीक है। इन्होंने सारे सेशन अटेंड किए एकदम, मैंने शायद नहीं किए हैं। तो इसके लिए सारा जो बधाई के पात्र सबसे ज्यादा वो है। दूसरा बधाई के पात्र हमारी संध्या संगई मैडम है, जो नोडल बनने के लिए एग्री हुई हैं। इनका नाम डायरेक्टर NCERT ने सजेस्ट किया था, हमें भेजा था, बताया कि मैडम will be able to coordinate with all the NRG members, और उन बहुत ही सक्सेसफुली हर वक्त, रात हो या दिन हो, सबके बायो नोट को कलेक्ट करना, सारे रिसोर्स पर्सन के उनके फ़ोन नंबर्स को अरेंज करना, वो सेशन शेड्यूल को इधर उधर करना, वो सारी चीज़ों में मैडम ने हमारी बहुत सहायता की। और मैडम हमारे साथ सेशंस में लगी रही हैं। कहीं उन्हें लगा कि हर बार पूछती थी तुम मीटिंग में तो नहीं हो, अगर नहीं हो तो, अगर गई हो तो मैं संभाल लेती हूँ। तो हमने कम से कम मैडम को तकलीफ देने की कोशिश की, बिकॉज शी वॉज नॉट वेल इवन, स्टिल शी हैज़ एक्सटेंडेड हर हेल्प। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि मैडम 2 शब्द बोलें। दिख नहीं रही है, लेफ्ट हो गई क्या, गलत डिस्कनेक्ट हो गई? Yes, I'm there. यस मैम। समय की कमी को देखते हुए मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो ही गई है। पर मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये तो जर्नी की शुरुआत है, और जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि ये बहुत जरूरी है कि हम इसको सतत रखें। We need to be very sincere with the journey we have started, because we have very aspirational programs, and we know
the conditions and circumstances with us. So इस सब के लिए बेस्ट विशेस। एक चीज जो मैं और इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए कहना चाहूंगी वो यही कि पीएबी में मुझको एक प्रोग्राम दिया गया है जिसके अंतर्गत मैं 5 रीजनल वर्कशॉप्स करूंगी और जो कि निपुण भारत इम्प्लीमेंटेशन से ही रिलेटेड है। तो उसको रीजनल रखने का पर्पस ये था कि हम फिजिकल मोड में और मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स के साथ मिल सकें। तो होपफुली एमओई विल आल्सो कम अलोंग और उसको मैं शेड्यूल करना, मैंने अभी सारे एसपीडीज को लेटर लिखा है कि वो अपने यहाँ से कुछ 5 लोगों को आइडेंटिफाई करके मुझे बताएं, बिकॉज आई वांट कि एक ग्रुप जिसको हम शुरू करें उसके साथ में हम कम्युनिकेट करें और उसके साथ में हम कैपेसिटी बिल्डिंग तक चलते रहें। आई नो कि सभी लोगों को जानना है, तो मैं अपनी इस चीज को एक बार दोबारा कहना चाहती थी और सभी स्टेट के लोगों को मैं करबद्ध प्रार्थना करना चाहती थी कि मैंने ये जो प्रोग्राम रखा है ये एक बहुत ही दिल से रखा है और यही सोचा है कि हम सब लोग मिलेंगे, शेयर भी करेंगे, स्टेटस भी लेंगे और एक दूसरे की सक्सेस के साथ साथ में उसको फॉलो भी करेंगे। तो आप सब भी इस ओर ध्यान दीजिएगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आज इस प्रोग्राम के लिए आप सभी का सबसे ज्यादा तारीफ है, क्योंकि जब तक पार्टिसिपेंट मोटिवेटेड नहीं होता रिसोर्स पर्सन को कभी भी सेशन लेना अच्छा नहीं लगता और ऑर्गेनाइजर्स को भी बार बार यही फीलिंग आती है कि प्रोग्राम में मजा नहीं आ रहा। सो इसकी जो सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन होनी चाहिए वो हमारे पार्टिसिपेंट्स की होनी चाहिए, बिकॉज दे वर वेरी इंक्विजिटिव ऑल्सो। सो फ्रॉम एनसीईआरटी आई वुड लाइक टू थैंक, हालांकि जेडी इस चीज को कह चुके हैं, लेकिन being a nodal from the NCERT and NRG, thank you so much. Thank you MOE, thank you Shri Santosh Yadav ji and Ritu particularly, because आप दोनों लोग इसमें closely associated हैं, and thank you all the participants. It's good कि हमारी जो reach है वो इतनी दूर तक है, and we hope that with this reach we will be able to sensitize at least first of all. So happy Deepavali to everyone and stay safe, celebrate Diwali with all safety, and Happy New Year also. Namaste. Namaste. I'm sure you are not leaving. Be there. Just 1 minute. So, हाँ, तो बिल्कुल आप you are going to organize regional conferences, regional workshops for all for Nipun Bharat mission. That's a very good information that you have given, ma'am. I think NCRT must do it. And one suggestion, or two suggestions from my side is that first is wherever you are doing, please arrange for online connectivity also. So the DTF members can also join. ATF members, those who cannot join in person, can be a part of it. At least can watch it. And we are planning to have an YouTube channel on which we can also provide links to these conferences, so everybody can watch your program. So एक ये सजेशन। दूसरा चीज़ है, अभी एक सजेशन आया था कि ATF का ग्रुप बना दीजिए, तो आपने 5 लोग मांगे हुए हैं, वो 5 ही हैं हर स्टेट से। वो तो यू प्लीज सेंड रिमाइंडर एंड राइट कि वो हमें 5 जो है वो ATF दे दीजिए। तो उससे क्या होगा ना, आप वो द सेम पर्सन विल कम, अदरवाइज रैंडमली दे विल डिप्यूट समबडी एल्स। तो प्लीज दिस वे दे उनको जो एक है कि इन पर्सन भी होना चाहिए, वो भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है, और इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप उनके तरफ से आ ही गया है, तो आपने चिट्ठी लिखी है, तो उन 5 के मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज भी अगर आप मांग लेंगे तो इट वुड बी अ ग्रेट कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो रैंडम मांगने की जगह पे वो ATF 5 ही है, 5 मेंबर ही ATF के। पंचों की राय इज द इम्पोर्टेंट राय करके 5 लोग रखे गए हैं स्टेट में, और 5 DTF होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। टाइम बहुत सारा ले लिया, मन नहीं कर रहा छोड़ने का आप लोगों को, बट हम लोग दोबारा सेकेंड फेज में मिलेंगे एकदम। और आप लोगों को दिवाली की बहुत सारी बधाई। पटाखे मत छुड़ाइएगा और मिठाइयाँ कम खाइएगा, खुशियाँ ज्यादा मनाइएगा। खूब खुश रहें, खूब आराम करें, रेस्ट करें, सोएं, 3 दिन की छुट्टी है, और परिवार के साथ रहें और तैयार हो जाएं 1 तारीख को दोबारा। ठीक है, नमस्कार आप सभी का। अच्छा, सब और धन्यवाद देना चाहती हूँ, धन्यवाद ज्ञापन भी तो बाकी, धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी सेक्रेटरी मैम का, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अप्रूव किया। हमारे AS सर, पूरा ब्रेन बिहाइंड दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। डायरेक्टर NCERT, जिन्होंने एकदम तैयार हो गए, अचानक से इस प्रोग्राम को डिजाइन किया और एकदम तैयार हो गए कि नहीं, पूरा NCERT इसमें आएगा, हम सब लोगों का सहयोग होगा। जॉइंट डायरेक्टर NCERT, जॉइंट डायरेक्टर NI NCERT, जॉइंट डायरेक्टर
CIT NCRT प्रोफेसर बेहरा, प्रोफेसर श्रीधर श्रीवास्तव सर, और सभी NRG मेंबर, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो हमारे ऑफिसर्स हैं जो अभी सेशन आगे लेंगे और जिन्होंने सेशन लिया है, खासकर राशि मैम ने इसमें सेशन लिया है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे स्टाफ का, मेरे कंसल्टेंट्स का, सभी का। इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, उसको हम जब फेज 2 का वैलिडिटी करेंगे तब बता देंगे। अभी के लिए धन्यवाद और नमस्कार। स्वस्थ रहे, खुश रहे। NIC का भी बहुत धन्यवाद सबसे खास।